Yes, very good afternoon, my dear friends. Right, come on. So, friends, we are done with previous session. We are done with discussion about the topic of PGBP. So, with that, we completed all the 5 heads of income, and we also completed basics, residential status, agricultural income, income exempt from tax, and we also spoke about a topic known as what? Clubbing, set off, advance tax, levy of interest. All these areas are done. TDS, almost have more than half part of TDS is already over during discussion of PGBP. Clear, no friends? But we have few still have some more discussion to be done, which we'll spend some very good time today, and we'll do it. Are we ready? Chalo guys. Tell me, my dear friends, what is section 28? Charity section for PGBP. 29. Computation 30. Expenses related to building 31. Repairs and insurance for plant machinery and furniture 32. 32 to 35. 35 AD. Specified business 35D. Amortization of preliminary expenses 35 DD. Amalgamation or demerger DDA. VRS 36. Other deduction 37. General deduction. Beta bolo. What is section 40 small a1? Payment to non-resident if TDS is not done or done but not paid before due date of return of income. क्या होगा बेटा? 100% is allowed. 40 small a1a. Resident if TDS is not done or done but not paid क्या होगा बेटा? 30% disallowed. 40 capital A2. Exactly. 40 capital A3. Single person, single day, paid more than. Exactly. 40 capital S7. Contribution to unapproved gratuity fund. 40 capital A9. Non-statutory fund. Example, staff welfare fund. Staff welfare expense is allowed. Staff welfare fund is not allowed. 40 small b. Excellent. Interest and salary. Interest maximum कितना बेटा? 12%. Salary based on limits, and limits are based on book profit. First 3 lakh or 90% of book profit, whichever is higher. Balance 60%. Good. 44 AA. Maintenance of books of accounts. 44 AB. Tax audit. 44 AD. Presumptive income for business. 44 ADA. Presumptive income for profession. AD is applicable only to individual, HUF and firm. If turnover does not exceed 2 crores. What is the presumptive income? 8%. But if it is 6%, if it is received by way of account pay check, account pay draft or online transfer on or before due date of return of income. 44 ADA. Presumptive income for profession. Limit क्या बेटा? 50 lakhs. Presumptive income 50%. 44 AE. Flying, hiring, leasing, goods carriage. बराबर है ना बेटा? क्या सीन है वहाँ पे? आंसर क्या है? This is applicable only to those who does not own more than 10 vehicles at any time during previous year. बोलो what is the presumptive income? Other than heavy goods vehicle, 7,500 per month per vehicle. Heavy goods vehicle, 1,000 per month per ton per vehicle. Excellent, of course. Are we clear with that, everybody? Good. Chalo, let's start. So friends, first, let me spend some good time on discussion about a brilliant, interesting topic first. Then we'll come back to that deductions, balance part and all. But first, let me complete a small topic known as ROI, which stands for Return of Income. Getting clarity? Everybody, sir? First of all, what is the due date to file return of income? 139(1), 31st October in 3 cases. In the case 31st July. क्या है 3 cases? Companies. Other than companies subject to tax audit. Partner of a firm, if the firm is subject to tax audit. बराबर है ना बेटा? Now my straight question to you. Who is supposed to file return of income?
for whom it is mandatory. Companies. Every person. Acha. There is one person, Mr. X. Every person. अच्छा एक मतलब एक मैंने एक बंदे का महीने का सॉरी महीने का नहीं महीने का 15,000 का सैलरी है, साल का 1.8 लाख है, उनको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा क्या? हाँ पूछो काका से फाइल कर रहे क्या? ऑप्शनल कैसा हुआ? अभी आप बोल रहे ना मैंडेटरी है. मेरा क्वेश्चन क्या था? आई डिडंट आस्क हु कैन फाइल. हु कैन फाइल मीन्स एनीबडी कैन फाइल. If I ask who can file, the answer is what? Anybody can file. But my question was what? For whom it is mandatory. समझ में आ रहा है बेटा क्वेश्चन? I didn't ask who can file. Who can file means anybody can file. Question is for whom it is mandatory to file. That's the question. No? Tax payable है उनको. अच्छा. एक बंदा है, उसका ग्रॉस टोटल इनकम 4 लाख है, एटीसी का डिडक्शन ले लिया 1.5 लाख, बाकी बच गया 2.5 लाख. ठीक है. एक और बंदा है, ग्रॉस टोटल इनकम 8 लाख, पूरा डिडक्शन ले लिया 3 लाख, कुछ तो एटीसी एटीई पूरा मिलके, बाकी बच गया 5 लाख. 2.5 लाख बोल तो टैक्स कितना है? 0. 5 लाख बोल तो टैक्स कितना है? 0. फर्स्ट क्वेश्चन रिबेट आएगा ना यार? हाँ. इन केस 1 शुड, आई डिडंट आस्क कैन. इफ इट इज कैन देन आंसर इज यस. Should he file return of income? Which case yes? हाँ. मेरा क्वेश्चन का आंसर दो यार. 87 ये सब मत बोलो. My question was very clear. For whom return of income is mandatory? Wonderful. Wrong answer. Both case answer is yes. What they told in the law is under section 139(1) they specified that in case of companies and in case of partnership firm, return of income is mandatory irrespective of their income or loss. Clear my difference? But for others, if total income before deduction under chapter 6A, लैंग्वेज समझ में आ रहा है क्या? बिफोर डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A, 54, 54B, 54EC, 54F, 54D. exceeds बेसिक एग्जम्पशन लिमिट. मतलब एग्जम्पशन से पहले कौन सा एग्जम्पशन? कैपिटल गेन एग्जम्पशन से पहले, चैप्टर से रिडक्शन से पहले टोटल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, देन रिटर्न ऑफ इनकम इज मैंडेटरी. फाइनली लास्ट पॉइंट, ROR. Who is ROR? Resident and ordinarily resident. ROR who has any asset outside India or who has signing authority in any bank account outside India. Language समझे क्या बेटा? Speak out. That means in short they are trying to say ROR, please file return of income if you have any foreign asset. If you have any foreign asset, that's it. 139(1) is over. And the due date to file already we know. What's the due date to file? 31st October in 3 cases. In other case 31st July. That's it. Take it. Come on, take it. Very important.
So are we clear with this point? चलो बेटा बताओ किसको रिटर्न ऑफ इनकम फाइलिंग मैंडेटरी है? Company and firms always mandatory. Others mandatory only if total income before chapter X deduction and before capital gains exemption is more than basic exemption limit. Final last point what I wrote. ROR. If he has any asset outside India or signing authority in a bank account located where? Outside India. Are we clear with this point, everyone? Friends, come on, please reply, everybody. So done. Can I move forward? So what is section 139.1? 139.1 is due date to file return of income and who has to file return of income. Are we clear with that? Next section, guys. 139.3 return of loss. Already we know the answer. That is no loss can be carry forward. No loss can be what beta? Carry forward if ROI is not filed within due date. समझ में आ रहा ना बेटा? Except what? बोलो answer. And unabsorbed depreciation. That's it. So clear? Everybody? So what is 139.1? Return of income, due date and who has to file. 139.3 beta, return of loss. Now tell me guys, there is a company whose turnover is just 40 lakh. That means what is my answer? No tax audit. And I am in financial year 22-23. Tax audit कर रहे क्या बेटा? नहीं. अब मुझे बताओ, what is the due date to file return of income? Not tax audit. 31st October, exactly. Why? Once it's a company, the due date is 31st October. It doesn't matter the story of tax audit and all. Speak out. Now I have a question. Company did not file by 31st October. Company did not file by 31st October. क्या करेंगे? बाद में फाइल करेंगे. Very good. What do you call it then? That is called belated return. Sir, we say no, belated happy birthday. Same logic, belated return. Section 139(4). Now the point is, if you have not filed by 31st October, you can file after the due date. But कब तक? They told in the law, maximum time limit is within 3 months before the end of assessment year. 3 months before the end of assessment year. Or completion of assessment. That means assessing officer is calculating what is your income and is passing the order. 3 months before complete end of assessment year or completion of assessment, whichever is earlier. That's why practically we say 31st December as answer. Why 31st December? End of assessment year is 31st March. 3 months before is 31st December. तो अक्टूबर तक फाइल नहीं करे तो कब तक टाइम है आदमी के पास? दिसंबर तक टाइम है. दोस्तों समझ में आ रहा है क्या? And when you say that you will file after the due date, my dear friends, you have to pay something called 234A. Already पता है अपने को ये? What is 234A?
Interest for delay filing of return of income. What is the rate of interest? 1% per month or part thereof. Next, there is something called 234F beta, which is late fees. 234A is interest. 234F is वो भी आएगा, ये भी आएगा, and the late fees is straight away 5,000, 5,000 रुपए. And if total income does not exceed 5 lakhs, I repeat again, total income does not exceed how much beta? If total income does not exceed 5 lakhs, then late fees is 1,000. Point समझे क्या बेटा? Generally, what is the late fees? 5,000. But if total income does not exceed 5 lakhs, what is the late fees? 1,000. क्या हो बेटा? कभी भी है. हाँ, डाउट क्या आपका? नवंबर में फाइल करे तो लेट भी भरना पड़ेगा, दिसंबर में फाइल करे तभी भरना पड़ेगा, उसके बाद फाइल कर ही नहीं सकता. नहीं, वो दिसंबर ही लास्ट है. ना वो क्या है बताता मैं, रुक. So are we clear with this point, everybody? Friends, are we clear with this point, all of us? So what is 139.1? Due date of return of income, who has to file return of income? 139.3, return of loss. We cannot carry forward the loss unless we file return of income within the due date, except house property loss and unabsorbed depreciation. 139.4, belated return. Time limit क्या है बेटा? 3 months before the end of assessment year or completion of assessment, whichever is earlier. So we file the return late. What are the consequences? एक तो interest, दूसरा late fee, तीसरा you can't carry forward the loss other than HP loss and unabsorbed depreciation. They are the 3 problems if you don't file return on time. Clear, no? And it's not mandatory that for return of income assessor should go to chartered accountant. He can file by himself. CA का sign लगता नहीं उसमें. But if it is tax audit, then CA is mandatory. Clear, no, everybody? Now listen. Chair, person has filed return. Return of income is filed. Return of income is what? Filed. After that, he realized that shit, man, गड़बड़ हो गया. What he can do? Exactly. Law told, don't worry, don't cry, need not give sounds. They told you can revise the return. And the time limit is, see here, 3 months. Within 3 months before the end of relevant assessment year or completion of assessment. Language समझ में आ रहा है क्या बेटा? Or completion of assessment. These two, whichever is earlier. I'm sure we are getting clarity on this point, everybody. Within 3 months before the end of relevant assessment year or completion of assessment, whichever is earlier. In short, can I say belated return and revised return time limits are same?
Is that okay? Is it a valid statement? Definitely answer is yes. Friends, are we clear with this? चलो बोलो टाइम लिमिट क्या है? Within 3 months before the end of relevant assessment year or completion of assessment, whichever is earlier. Time limit is same in case of belated return and also in case of revised return. दोनों केस में टाइम लिमिट सेम है. क्या बोला? कर सकते हैं. कोई मिस कर दे तो डेडलाइन, कोई भी कारण से उसने डेडलाइन मिस कर दिया. और आजकल लोगों को ऐसा है कि आप जैसा बोल रहे हैं ना कि कुछ भी भरने का बाद में रिवाइज करने का, लोगों को पड़ जाती ऐसा करने में. क्यों? मतलब बीएटीएल में इनकम टैक्स नो सबको फटी रहती है कि कब नोटिस आ जाए, कब कुछ पूछे कि डेटा बराबर नहीं है. Who is completely transparent, they are not more scared. But who has got lot of transaction settlement, they are always scared. Clear no? चलो बेटा 1391 due date of return of 1393 return of loss 1394 belated 1395 revised return. Now listen everybody, very very important point I'll tell. Listen carefully sir. Sir, let us say there is one person Mr. X, salaried employee. ठीक है ना बेटा? And the salary is, I'm giving practical example which I have seen few days back only. Salary is 10 lakh. Okay? For financial year 22-23. What is the due date to file return of income, beta? 31st July 23. दोस्तों बोलो ना यार. 31st July 23. But he has not filed within the due date. तो बोलो क्या कर सकता हूं? He has time till 31st December 23. But this also he missed. समझ में आया क्या? ओरिजिनल रिटर्न टाइम पे फाइल नहीं हुआ तो हम क्या बोलते हैं हमेशा, कोई प्रॉब्लम नहीं है बॉस, बिलेटेड रिटर्न फाइल करो. पर ये सब भाई साहब का क्या हुआ, बिलेटेड भी फाइल नहीं करा, दिसंबर क्रॉस हो गया. कैन यू फाइल द रिटर्न? आंसर इज नो. बट फॉर दिस काइंड ऑफ लेजी पीपल, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हैज ब्रॉट वन इंटरेस्टिंग सेक्शन कॉल्ड 139(8)(a, which is called as updated return. नाम क्या बेटा इसका? It can be filed in two cases. ROI not filed. ROI is already filed. You want to update again, you can, provided you are increasing income or reduce the loss. समझ में आ रहा है क्या बेटा? That means in short, government is telling you file updated return only if it is favorable to government. Getting my point, everybody? Speak out. Now listen very clearly here. Listen. This updated return, the most dangerous point of this updated return is something like this. Updated return can be filed within 24 months. Within how many months, beta? 24 months from the end of relevant assessment year. Getting clarity, everybody? Speak out, my dear friends. And if you are filing within 12 months, then there is a additional tax what you have to pay. Additional tax what you have to pay, which is
straight away 25% of tax payable. So if the tax payable is 1 lakh, please pay extra 25,000. And if you are filing after 12 months, but within 24 months, please pay additional tax at the rate of 50% of tax payable. मतलब आपका टैक्स पेबल अगर लाख रुपए है तो एक्ट क्या बोल रहा है 1 लाख 1.5 लाख पे कर तेरे को फायदा दे रहे ना. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गिविंग ए प्रिविलेज फॉर यू टू फाइल व्हाट मोर यू वांट पे इट एंड फाइल इट. यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग एवरीबॉडी. दोस्तों प्लीज बताओ मेरे को. Everybody getting clarity on this point, all of us? Which section all this 139? 8A deals with what? Updated return. Getting clarity everybody? Please, come on, open your material once. Come on, see here. चलो फर्स्ट कौन सेक्शन है 139 1 स्पीक आउट. किसके लिए मैंडेटरी है? फॉर कंपनीज एंड फर्म्स इट इज मैंडेटरी. अदर्स क्या है स्टोरी बेटा? डिडक्शन से पहले और वो एग्जम्पशन से पहले. दोस्तों नेक्स्ट, एवरी ROR located outside India, if he has got any asset outside India, again return of income is mandatory. Getting clarity? Next point is important. Latest amendment. High possibility question can come in the exam. Compulsory filing of return of income in some cases. See the point. First one, he has deposited more than 1 crore in the current account. कुछ याद है क्या? He has deposited about more than 1 crore in what account? Current account. Second, he has incurred more than 2 lakhs for travel to foreign country. चलो फर्स्ट वाला पॉइंट क्या है? More than 1 crore deposited in what account? Current account. Second क्या है? He is going for a foreign travel and he is spending how much? More than 2 lakhs. Either he is going or somebody is going, but he has spent. Correct? No? दोस्तों third point, more than 1 lakh he paid current bill, power bill. दोस्तों what is the first point? Come on. More than 1 crore deposited in what account? Current account. Second, more than 2 lakhs for travel foreign country. More than 1 lakh for electricity. समझ में आ रहा क्या? Next, if turnover is more than 60 lakhs in business, profession, gross assets more than 10 lakhs. Finally, if the aggregate of TDS, TCS, aggregate of what? TDS, TCS is how much? 25,000 और मोर. समझ में आ रहा क्या बेटा? रिपीट करो. अभी तक क्या पढ़े हम लोग? क्या क्या पॉइंट्स है? करंट अकाउंट मोर देन 1 crore. ट्रैवलिंग मोर देन 2 crores. Sorry, traveling expenditure income more than 2 lakhs. Sorry, I said 2 crores. Sorry. Current account more than 1 crore. Travel more than 2 lakhs for foreign country. Next, electricity bill more than 1 lakh. Then business turnover more than 60 lakh. Professional turnover more than 10 lakhs. Correct? No? Then aggregate of TDS, TCS is 25,000 or more. Next point. However, resident individual who is at 60 years or more at any time during previous year would be required to file return only if aggregate of TDS, TCS in his case is how much? 50,000 or more. आदित्य समझ में आ रहा है क्या? Next, finally, the time deposit. The deposit in one or more what account? Savings bank account of the person in aggregate is how much? 50 lakhs or more during the previous year. So in all these cases, filing of return of income is mandatory. So these cases, even though your total income does not exceed basic exemption limit, still you have to file return of income. Clear है बेटा? Repeat करो क्या क्या cases है? Come on, first one. Deposit in current account more than 1 crore. Second, foreign travel more than 2 lakhs. Power bill more than 1 lakh. Turnover in business more than 60 lakhs.
turnover in profession more than 10 lakhs. Aggregate TDS TCS is 25,000 or more. Senior 50,000 or more. Last point. Savings bank deposit is how much? 50 lakhs or more. दोस्तों clear है? Next. What's the due date? 31st October, 30th November, 31st July. Clear है ना बेटा? दोस्तों 30th November ट्रांसफर प्राइसिंग वाले हैं. ये अपने को CA इंटर लेवल पे एप्लीकेबल नहीं है. CA फाइनल में आएगा, टेंशन मत लो. ऑलरेडी बोला मैं ये चीज आपको. And for whom transfer pricing will apply, let me tell one point. It will apply only to those where there is a foreign entity, there is an Indian entity, both are related persons. Example, Facebook Inc., Facebook India, Google, Google Inc. Arm's length price, exactly. To check whether transactions at arm's length or not. सुनिए what arm's length price? कहाँ पे सुनिए? Accounts, audit, arm's length. Done. This point we just discussed. More than 10 lakhs in what? Business turnover more than 60 lakhs. Profession more than 10 lakhs. TDS TCS 50,000 or more, 25,000 or more. Savings bank account 50 lakhs or more. Sir, same thing in chart. Sir, same thing in chart. Are we clear with that? So, dosto, in short to say, for companies it's mandatory. Firms it is mandatory. Others only if total income before deduction is more than what? Basic exemption limit. That's it. Clear है ना बेटा? चलो एक बार रिवाइज करते. 139.1 is what? Return of income. What is the due date to file? 31st October. In how many cases? 3 cases. What is the first one? Company. Second, other than company subject to tax audit. Third, partner of a firm. If the firm is subject to tax audit. In the case 31st July, 30th November not relevant for CA inter level. ठीक है ना बेटा? Then who is supposed to file mandatorily? Companies and firm तो हमेशा mandatory है. Other than that, it's mandatory only if total income before chapter 6A, before your capital gain exemption is more than. Exactly. Next, what are the cases where even though it is not more than basic exemption limit, still return of income is required? Current account deposited more than 1 crore. Foreign travel more than 2 lakhs. Electricity more than 1 lakh. Then business turnover more than 60 lakh. Professional turnover more than 10 lakhs. Aggregate of TDS, TCS 25,000 or more. Senior citizen 50,000 or more. Then deposit in current account, savings account 50 lakhs or more. That's it. I think we are clear. Totally guys. Pakka. जरूरी नहीं ना. फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है जिसका टर्नओवर 5 करोड़ है. ठीक है, सोल प्रोपरेटर है. सोल प्रोपरेटर मतलब जानते ना अपन अभी. ठीक है, एक्सपेंसेस 5.3 करोड़ से, तो बैलेंस लॉस है. अब आप बोलेंगे लॉस कैरी फॉरवर्ड करने के लिए कर सकते हैं ना सर. ठीक है, टर्नओवर 5 करोड़ है and the expenses are 4 crore 98 lakhs. Net profit 2 lakhs. Student ask कैसे हो सकता है सर? Sir, I have seen a balance sheet, I have seen a P&L account where turnover is 78 crores. मेरा क्लाइंट का ये 78 crores और 100 crores टर्नओवर है हर साल. Profit margin is hardly 1%, which is 78 lakhs. समझ में आ रहा है क्या? मेरा एक दूसरा क्लाइंट है मेरा जिसका टर्नओवर है ही 6 करोड़, नेट प्रॉफिट इज 2 करोड़. फ्रेंड्स, टर्नओवर 6 करोड़, नेट प्रॉफिट 2 करोड़, खर्चा है ही नहीं कुछ. They do the software consultancy. They do the back-end work for a lot of gaming apps. So many games what we play, uska back-end jo bug detection, all that specialized security service they provide for the back-end games. And हम लोग जब game खेलते, automatically suddenly ads will come. No, how do they integrate all that activity they do? 6 करोड़ टर्नओवर है,
प्रॉफिट चौक 2 करोड़ है. Who is better? 6 crore. But not everybody business is like that, no? समझ में आ रहा क्या? Done. 139.3. What बेटा? Return of loss. Friends, everybody, just strike off this word, no? Because we know that only 2 losses can be carried forward. What are the 2 losses? HP loss and unabsorbed depreciation. बाकी कुछ carry forward नहीं होगा. क्या पूछ रहे थे अभी आप? जिसका मैंडेटरी है तो फाइल नहीं किया तो क्या होगा? इंटरेस्ट, लेट फीस, एंड अगर मालूम पड़ा कि कुछ तो अनएक्सप्लेन्ड है, पेनाल्टीज. देन 139.4 is what beta? Belated return. 139.5 revised return. I'll ask you one question. Think properly and tell me, my dear friends. Can a belated return be revised? Definitely answer is yes. Here you write the latest amendment. Last line. You filed late, still you want to revise, you can still revise. समझ में आ रहा है क्या बेटा? दोस्तों, so I'll ask you one question now. Tell me, can the belated return be revised? So you filed late and you want to revise. Can you revise? Definitely answer is yes. Clear now? Done. 139.9 we'll see later. Come to 139.8a. किधर है 8a? रहेगा कहीं तो बाद में. See that concept of what बेटा? Updated return. दिख रहा है क्या? यार see that, my dear friends. Page number 120. Speak out. चलो updated return. Time limit कितना है बेटा? 24 months. From the end of what? From the end of relevant assessment year. Correct, no? Sir. And who can file this? Any person who has not filed the return or has already filed the return. But you can't file updated return if it's a loss or it has the effect of decreasing the tax liability. We want you to increase, not to reduce. समझ में आ रहा है बेटा? Next point. CA इंटर मैंने फाइनल में समझेगा, फिर भी देख लो. You can't file updated return if any search is done, income tax survey is done. In those cases, you can't file updated return. हाँ, स्क्रूटिनी वाला है. स्क्रूटिनी नहीं, सर्च सीजर. वो नेक्स्ट लेवल ही है. स्क्रूटिनी मतलब नोटिस आता, सर्च सर्वे मतलब वो लोग आ गए. डायरेक्ट एंट्री. चलो friends, getting clarity. If you see an important point, if it is filed before what? If it is furnished after expiry of time limit but before completion of how many months? 12 months from the end of relevant assessment year, then what is the answer? 25% of aggregate of tax and interest computed above. And if it is after 12 months but before 24 months, 50% of aggregate of tax and interest as computed above. So getting clarity everybody? Speak out. तो 12 महीने के अंदर फाइल करेंगे तो कितना लगेगा? 25%. 12 महीने के बाद 24 महीने के अंदर 50%. Are we getting clarity everybody? क्या कब? नहीं, आप पहले रिटर्न फाइल नहीं किए और अभी पहली बार फाइल कर रहे, वो अपडेटेड रिटर्न है. आपका टैक्स लाख रुपए आया तो अब लाख रुपए में नहीं भर सकते, 1,25,000 भरना पड़ेगा एक्स्ट्रा टैक्स. नहीं, जो आपका फाइनल टैक्स रहेगा ना उसके ऊपर 25%.
क्या बोल रही है? हाँ नहीं, पहले आप पूरे सरचार्जेस पूरा निकाल दो, जो फिगर आएगा उसका 25%। नहीं, अरे 1 लाख मतलब पूरा टैक्स है, फाइनल टैक्स है ये। जनरली दैट इज हाउ इट इज कैलकुलेटेड। Done. Are you getting clarity on spot, everybody? Take this in notes. 24 मंथ्स के बाद किया तो 24 मंथ्स के बाद नहीं कर सकते बेटा, फाइल ही नहीं कर सकते उमेश। बड़ी यार दोस्तों बताओ यार, चलो। सो व्हाट इज सेक्शन 139 1, 139 3, 139 4, 139 5, 139 80, updated return 234A, 234B, non-payment or short payment of advance tax when we paid less than 90% of tax payable, 234C, deferment of advance tax। दोस्तों बराबर है ना यार? रिप्लाई करो बेटा प्लीज, कम ऑन क्विकली रेस्पॉन्ड एवरीबॉडी, जस्ट 1 मिनट। See this Shashank once. Just searching for one example so that I can show you.
दिख रहा है क्या अभी? हाँ, ये देखो टैक्स निकाल दिए, उतना दिमाग मत चलाओ, टैक्स निकाले टीडीएस माइनस कर दिए, या दिख रहा है ना, टीडीएस माइनस करे, फिर बैलेंस आया, एडवांस टैक्स निकाल दिए, ए बी सी पूरा इंटरेस्ट ऐड कर दिए, फिर लेट फी भी ऐड कर दिए, पूरा टैक्स प्लस इंटरेस्ट प्लस फ्री माइनस प्रीपेड टैक्स कुछ है तो वो माइनस कर देंगे। ये 12 लाख टोटल वही आ रहा है क्या? ये टोटल निकालो बेटा एक बार अभी, जस्ट टेक योर कैलकुलेटर एंड चेक दिस टोटल। $843,866,80 plus $134,976 plus $168,720 plus $54,752 plus $5,000 5,000 तक ऐड करें ना आप, ये प्लस है, ये प्लस नहीं है, प्रीपेड टैक्स क्या है फिर ये? अच्छा एडवांस टैक्स माइनस कर लिया क्या? ठीक है जो भी है ये पूरा ऐड कर दो, 1207 आ रहा है ना। ये फाइनल टैक्स है ना, इंक्लूडिंग सरचार्ज जो भी हो, इसका 25%। आ रहा है क्या? अब जस्ट थिंकिंग, मैं सोच रहा था वही कि फोन में कुछ दूसरा क्लाइंट का डॉक्यूमेंट है जिसमें मैं चेक करूँ, पर वो मिल रहा नहीं था डॉक्यूमेंट, इसलिए मैं तब से वेट कर रहा था कि क्या कहाँ से बताओ आप सबको, इसलिए वेट कर रहा था और कुछ नहीं। समझ में आना, क्लैरिटी है ना? तो मतलब 25 पे सरचार्ज आएगा क्या, ये सब बिल्कुल मत सोचो, तुम जैसा टैक्स नॉर्मली निकालते हैं वैसे ही निकालो, सरचार्ज भी ऐड करो, सेस भी ऐड करो, सब जो भी करना है सब खत्म करो, फाइनल जो टैक्स पेबल आता ना उसको एक्स्ट्रा 25% ऐड कर दो। मतलब इंडायरेक्टली सरचार्ज पे भी 25 ले रहे हो, सेस पे भी 25 ले रहे हैं, वो सीधा क्या बोल रहे हैं, तुम्हारा जो टैक्स पेबल है उसका 25% हम लेंगे एक्स्ट्रा। अगर 12 महीने के अंदर फाइल करे तो, अगर 12 महीने के बाद 24 महीने के अंदर 50%, 24 महीने के बाद तुम कर ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते। मतलब क्या होगा सोच रहे क्या? लव लेटर विल कम फ्रॉम द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टेलिंग यू एस्केप टू पेइंग टैक्स, प्लीज पे नाउ along with penalty। नहीं, penalty is 100% of tax, and in that there is something called misreporting of income. If it is misreporting of income, penalty is 200% of tax also। सस्ता नहीं पड़ता और महंगा पड़ता है वो। करेक्ट नो, ऑन टुडेज डेट इफ यू डोंट फाइल रिटर्न वी आर ओनली एट लॉस। बहुत जगह पे पर किधर भी जाओ सब जगह यही पूछ रहे, रिटर्न दो रिटर्न दो रिटर्न दो, बराबर है ना? डन, नाउ आई एम हैप्पी, अभी खुश हो रही। सर क्लियर है क्या? ऐसा कुछ डाउट आया उसको दिखाई नहीं तो मेरे को खुशी नहीं होती यार, कांट कंट्रोल माई सेल्फ। ठीक है सर, क्लियर? आदित्य क्लियर? यस वेदांत, कम ऑन रिप्लाई। 139(1) due date of return of income, compulsory filing, who has to file? 139(3) return of loss, 139(4) 139(5) revised return, 139(8)A exactly. Get back guys, come on, brilliant. Vedant reply, are you Vedant? चलो बेटा, so what is 139(1), 139(3) return of loss, 139(4) belated return, 139(5) revised return, 139(8)A updated return, 234A interest on delayed filing of return of income, 234B interest on non-payment or short period advance tax paid less than 90%, 234C exactly, 234F late fees, कितना है late fees? 5,000. Then what will happen? Excellent. Are we clear with that? Everybody saw? Yes Nitya, come on reply. Good. Understood no? Brilliant. उमेश क्या कर रहा है भाई, सो रहा है क्या? रिप्लाई दे। नेक्स्ट। हाँ एग्जैक्टली। 104 क्या है बेटा? कितने बार पूछे तू जवाब नहीं दे रहा ना फिर। 5 there is something called 139(9) which talks about something called
defective return. Name only says, what sir? Defective return. Your data is not properly filled, or the data what you submitted is not matching with the TDS statements. Then the return is called defective return. Then AO will send a notice and he will give 15 days time to rectify the defect. So if we rectify within 15 days, what will happen? कुछ नहीं होगा. We don't rectify within 15 days. It is treated as if return is not filed. समझ में आ रहा है क्या बेटा? It is treated as if return is not filed. Return will become invalid return. It is as good as you have not filed the return, no? नहीं. If you rectify within 15 days, no problem only. Done? ये प्रैक्टिकली वो खुद करता ही नहीं है, सिस्टम जनरेट होता है पूरा. मतलब अपन रिटर्न फाइल करे, कुछ कॉलम मिस कर दिए, या फॉर एग्जांपल सिंपल पॉइंट सर, आई एम श्योर वुड हैव हर्ड अबाउट दिस डेफिनेटली. देयर इज समथिंग कॉल्ड फॉर्म 26 AS, जिसमें हर बंदे का अपना TDS क्रेडिट दिखता है. फॉर एग्जांपल Shiva Teja gets income from source A, source B, source C. All these people who are paying me, they will do TDS. And everyone is filing TDS return. What government is doing is, they will consolidate one form called 26 AS. उसमें दिखाते, ये बंदा ने इतना पे किया, इतना TDS किया, B बंदा इतना पे किया, इतना TDS किया, C बंदा इतना पे किया, इतना TDS किया. ये सब एग्जाम में नहीं है, बट फिर भी समझा रहा हूँ आपको मैं. समझ में आ रहा है क्या? इमेजिन करो 26 AS के हिसाब से मेरा टोटल इनकम 60 लाख रुपए, बट मेरा P&L अकाउंट में मैं टर्नओवर दिखाया सिर्फ 50 लाख. सिस्टम ऑटोमेटिकली नोटिस देता है, सॉफ्टवेयर, सेइंग दैट रिटर्न इज डिफेक्टिव रिटर्न बिकॉज इट इज नॉट मैचिंग विद 26 AS. और मुझे बहुत बार आया है सर, मुझे बहुत बार आया है सर. स्टूडेंट आस्किंग, क्यों सर ऐसा क्यों करते आप, ऐसा क्यों करते क्या? I follow something called cash system of accounting. I'm not a company, an individual, no. I can follow cash system, no. I follow cash system of accounting, but the people who are paying me are following accrual system. So if expert is paying me March month, they will create a provision. 22, 23, when the books of accounts are closed, they will create a provision. शिवा तेजा को 10 लाख पेबल है करके. अब 10 लाख इधर इनकम दिख रहा है 26 डेज में, बट मैं टैक्स पे नहीं करता. अभी मैं 23-24 में टैक्स पे करता, बिकॉज मुझे पैसा आया अप्रैल में. प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे रहा आपको मैं, समझ में आ रहा है ना? स्ट्रेट प्रैक्टिकल पॉइंट आई एम टेलिंग. जब मुझे अप्रैल में पैसा आ रहा है तो 23-24 में टैक्स भरूंगा यार, बट वो लोग तो ऐसे ही दिखा रहे ना, तो मुझे नोटिस आता है हर बार, मैं उनको रिप्लाई कर दूंगा. आई फॉलो कैश सिस्टम बट नॉट मार्केट सिस्टम. दे रिकॉर्डेड TDS, आई डिड नॉट, बट दे विल आस्क वन थिंग. अगर आप 10 लाख इनकम नहीं दिखाए तो 1 लाख का जो TDS क्रेडिट है वो भी मत लो. मैं रिप्लाई कर दूंगा, मैं ना इनकम दिखाया, मैं ना क्रेडिट लिया, वो क्रेडिट छोड़ के बाकी का क्रेडिट ही लिया मैंने. वो बोलेगा ठीक है. अरे समझ में आ रहा है क्या? स्पीक आउट माय डियर फ्रेंड्स. डन. 2-3 बार आया मुझे 1399, रिप्लाई कर देता, काम खत्म. चलो 1391, 1393, 1394, 1395, 1399, defective return, 139.8A, updated return. यहाँ तक सबको क्लियर है? पक्का माय डियर फ्रेंड्स? चलो लेट्स गो बैक टू द नोट्स. किधर है अपन? बिलेटेड रिटर्न, ये क्लियर है ना स्टोरी दोस्तों? चलो कम ऑन. पैन, व्हाट इज इट सर? पैन, व्हाट इज पैन? What is PAN? Permanent account number. How many digit it is? You decide one, 10 or 15 or 14. हाँ? 15. अगर कोई पैन 15 का नहीं दिखा है मुझे अभी, अच्छा नहीं दिखता बोल रहा मैं. कुछ भी बोलते 15 डिजिट नॉनसेंस. पैन इज ए 10 digit अल्फा न्यूमेरिक कोड. Guys, yes or no, sir?
GST is a 15-digit alphanumeric code, but PAN is a 10-digit code only, no? And GST is PAN based. क्या समझ में आ रहा है क्या यार? बोलना बेटा. चलो. Now who has top 10 PAN? If his total income is more than what? Base commission limit. And any person carrying out business or profession, turnover is more than what? Then any person being a resident other than individual who enters into financial transaction aggregate into 2.5 lakhs or more in a financial year on or before which date? 31st May of the immediately following financial year. But the whole point is all about what are the transactions for which quoting of PAN is mandatory. एग्जाम में कभी कभी 2 मार्क को आ रहे हैं. आपको लास्ट टाइम का आरटीपी दिखा याद है? उसमें 3-4 पॉइंट था. उन्होंने पूछ लिया किस केस में पैन रिक्वायर्ड है, किस केस में पैन रिक्वायर्ड नहीं है. समझ में आ रहा है क्या बेटा मैं क्या बोल रहा हूं? आदित्य, हम किसकी बात कर रहे हैं, समझ में आया क्या? See here, come on. First, sale or purchase of what? Motor vehicle. But see the word other than two-wheeler. Other than, मतलब what? If you want to buy a car, PAN is mandatory. Exam में 1 mark question आता है. A person is buying a bike. Is quoting of PAN required? Answer is no. If we don't have a clarity, we'll get the doubts. Once doubt comes, we are stuck. We are stuck. 1 mark gone. And it's not 1 mark, it is 6 months. RTP में है क्वेश्चन ये. 4 पॉइंट दिए और पूछा है. मैं आपसे डिस्कस भी किया ये चीज बीच में, याद है क्या? हाँ, आरटीपी का एक क्वेश्चन था ना, विच केस पैन इज रिक्वायर्ड. नेक्स्ट सेकंड, ओपनिंग एन अकाउंट. व्हाट काइंड ऑफ अकाउंट? अदर देन टाइम डिपॉजिट एंड बेसिक सेविंग्स बैंक अकाउंट विद अ बैंक. सो इफ यू वांट टू ओपन अ करंट अकाउंट, पैन इज मैंडेटरी. नेक्स्ट, मेकिंग एप्लीकेशन टू द बैंक फॉर इश्यू ऑफ व्हाट? क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड पूछेगा बैंक. नेक्स्ट, ओपनिंग व्हाट अकाउंट? Next, payment to a hotel or restaurant and you are paying in cash of an amount exceeding 50,000. Next, foreign travel, payment in cash exceeding 50,000. Mutual fund more than 50,000. Bonds, debentures more than 50,000. RBI bonds 50,000. And if you want to go to the bank and deposit more than 50,000, again PAN is required. आप जाके बैंक में कैश डिपॉजिट करेंगे more than 50,000, वो पैन पूछेगा आपसे. Next, if you want to take a DD more than 50,000 in a day. Next, time deposit मतलब fixed deposit. Amount exceeding कितना बेटा? 50,000. I repeat again, amount exceeding 50,000 or aggregating to more than 5 lakhs during a financial year. Getting clarity everybody? Speak out my dear friends. Amount exceeding how much? Amount exceeding how much? 50,000. Or aggregate to more than 5 lakhs. Next, payment in cash or by way of bank draft to an amount aggregating to more than 50,000 to buy your prepaid instruments. Prepaid instrument issued by RBI. Something like your bonds. Next, life insurance more than what? 50,000. This is important. Purchase or sale of securities more than 1 lakh. Sale or purchase by any person of a shares not listed in stock exchange. Again more than 1 lakh. Next point important, came in exam 2-3 times. Sale or purchase of immovable property amount exceeding 10 lakhs. Then sale of purchase by any person of goods and services of any nature amount exceeding 2 lakhs. So if you want to do a transaction more than 2 lakh, they'll definitely ask you PAN. Getting clarity? Let's revise all this once again. First point, time deposits exceeding what? Next, or deposits aggregating to more than 5 lakhs. Opening bank account, basic savings bank is excluded. Payment in cash for a DD more than 50,000. Cash deposit more than 50,000. Property 10 lakhs or more. Next, sale or purchase of motor vehicle or other vehicle other than two-wheeler. मतलब क्या? 4-wheeler, 3-wheeler. Okay. A contract for sale or purchase of securities exceeding कितना बेटा?
1 lakh. Cash payment to hotels and restaurant exceeding 50,000 at any one time. समझ में आ रहा है? क्या हुआ आदित्य? What is the discussion fun going on? देखो बेटा, so see here, Abhi, come on guys, see what they're asking. They've undertaken some transaction. They are asking which case PAN is required. Opening current account. Yes. Shares 1.5 lakh. 1 lakh limited. Two-wheeler vehicle. Professional laptop of 3 lakhs. Yes. क्यों? 2 lakh transaction वाला. समझ में आ रहा ना बेटा? हाँ? क्या बोला? क्या समझे? हाँ. वन टाइम का वर्ड किधर है इधर? Sale or purchase by any person of goods or services of any nature amount exceeding 2 lakh per transaction. ट्रांजैक्शन तो हो गया ना, आप पेमेंट पार्ट्स में कर रहे. समझ में आ रहा है ना बेटा? यार दोस्तों बोलो ना यार. टूलर नहीं पूछा वो. सर ये देखो, ये क्वेश्चन जो मैं आपसे बात नहीं कर पाया था थोड़े दिन पहले बिकॉज ये सैलरीज का था. देखो, ही वर्क्स इन लास्ट 20 years ड्यूरिंग द टीटे. बेसिक सैलरी फुल्ली टैक्सेबल. Client entertainment reimbursement of 20,000 per month, out of which he submitted bills for 2 lakh for the relevant year. ये बैंक में काम कर रहा है भाई, और क्लाइंट को एंटरटेन करने के लिए मैंने को 20,000 खर्च किया, तो साल में 240 खर्च किया और 2 लाख का बिल सबमिट किया. दो लाख टैक्सेबल क्यों हुआ बेटा? 2 लाख तो बिल्स दिया ना ऑलरेडी. ये 2 लाख बिल दिया तो 2 लाख को टैक्स क्यों करेंगे बेटा आप? दो लाख को तो बिल दिया ना वो. 240 minus 2 lakh. How much tax is only 40,000? Next point you see, leave travel assistance 4 lakh per annum. He took a trip to Goa with his spouse and 2 children. चलेगा. For which plane boarding tickets of 1 lakh, hotel booking of 3 lakh. भाई 3 lakh का नहीं मिलेगा डिडक्शन. 3 lakh तो टैक्सेबल है. Exemption is only for travel. खाने का. Next, performance bonus fully taxable. He is eligible to take a housing loan of 20 lakh at concessional rate of 2.5% per annum. He availed a housing loan of 15 lakhs out of the same on 1st June 22. No repayment was made. SBI rate is 8%. क्या होगा? 6.5 नहीं, 5.5. क्या हुआ दोस्त? क्लियर है ना? नेक्स्ट, बैंक ऑल्सो अलॉटेड 1500 इक्विटी शेयर्स एट 1300 पर शेयर. फेयर मार्केट वैल्यू वॉज 1500, उसको 1300 में आया. क्या होगा? बोलो बेटा. 200 रुपये टैक्सेबल. और बाद में ये बेच दिया 2100 में. जब 2100 में बेचा उसका कॉस्ट क्या लेंगे?
1500, दैट्स इट। क्या बचा इसमें क्वेश्चन में? कुछ भी नहीं है। हाउस प्रॉपर्टी तो ऑलरेडी पता है अपने को। फ्रेंड्स प्लीज स्पीक आउट। देखो 3 लाख टैक्सेबल है, परफॉर्मेंस बोनस टैक्सेबल है, 5.5% टैक्सेबल है, स्वेट इक्विटी शेयर्स टैक्सेबल है, सैलरी का आया स्टैंडर्ड एक्शन ले लो। हाउस प्रॉपर्टी तो अपने को आता ही है। ये कैपिटल गेन देखो 2100 माइनस 1500, अदर सोर्स ले लो, डिडक्शंस ले लो, आ गया तुम्हारा टोटल इनकम। Getting clarity, understood why I'm discussing, where you have realized that we can solve it. Now we are in that stage where we can tackle the questions. We reach that position now. सबको ये पॉइंट्स क्लियर है क्या बेटा? दोस्तों बोलो। Get back. So what is 1391? 1393. Return of loss. 1394. Belated return. 1395. Revised return. 1399. Defective return. 139A. PAN. 139.8A. Updated return. 139A is PAN. Next. Interchangeable of PAN with what, my dear friends? Aadhaar. Every person who is required to furnish or intimate his PAN may furnish Aadhaar in lieu of PAN, because I hope you know that Aadhaar PAN linking is happening now. मैं आपको याद दिला दूं, 31st March 2022 was the last date for Aadhaar PAN linking. लिंकिंग मतलब कुछ भी नहीं है, ओटीपी आता है, ओटीपी एंटर करना है, और ओटीपी तभी आएगा अगर डेट ऑफ बर्थ नेम मैचिंग है तो। मेरी मम्मी का थोड़े दिन पहले ही कराया, 1000 रुपये क्या चुप फालतू में, टाइम नहीं मिला तो हुआ नहीं काम। उनका डेट ऑफ बर्थ अलग अलग है पैन में, आधार में। और ये लोग क्या करें, जो 30 जून 22 के अंदर कराएंगे उनके लिए 500 रुपये ले रहे, उसके बाद सीधा 1000 रुपये, एंड लास्ट डेट बोल दिए 31 मार्च 23। इसके बाद पैन विल बिकम इनवैलिड पैन। सर ये this plan was there in 2021 to link and they scared people first. धमकी दिए, लोग सुने नहीं, 2022 तक लेके आए, फिर भी लोग सुने नहीं, फिर बोले 500,000 रुपये पे करो, लोग बोले ठीक है पे करते, वो बोले 23 तक वेट करेंगे। अब 23 के बाद क्या बोलेंगे मेरे हिसाब से, 2000 बोलेंगे, 3000 बोलेंगे, फिर बोलेंगे कंटिन्यू करो। शायद नहीं देंगे, वो बोलेंगे नहीं देंगे हम। अरे इंडिया में प्रॉब्लम क्या है ना, पीपल वर्क एट देयर कंफर्ट, दैट्स अ होल पॉइंट। सी मेरी मम्मी का कुछ भी काम नहीं था, छोटू सा काम था, आधार सेंटर जाके डेट ऑफ बर्थ के लिए तम लगा के आना था। मैंने मार्च 22 में करने वाला था वो काम, मार्च 22 में पोस्टपोन किया, 500 रुपये लग गई। अच्छा ठीक है यार 500 तो ऐसे भी गया, जून में करना है ना, जून तक करेंगे करके आराम से जून तक लेके गए। जून में फिर से भूल गए, जून में जिस दिन भूल गया ना मैं, फिर दिमाग क्या बोला है, 1000 तो कैसे भी लगेगा, अभी करूँ 1 महीने के बाद करूँ 2 महीने के बाद करूँ, 1000 तो लगेगा ही लगेगा। एक 10 दिन पहले कराया मैं काम। समझ में आ रहा है क्या? अभी भी क्यों कराया, क्योंकि वो बोल रहा है इनवैलिड है, इनवैलिड हो जाएगा। यार समझ में आ रहा है क्या बेटा? फ्रेंड्स स्पीक आउट। ये देखो 500 रुपये, 1000 रुपये, 234H। If it is by 30th June 500, after that it is 1000. So clear no? Next, quoting of Aadhaar. Every person who is eligible to obtain Aadhaar is mandatorily required to quote Aadhaar number in application form for allotment of PAN and also in return of income. And if it does not have Aadhaar, please quote enrollment ID of Aadhaar issued at the time of enrollment in the application form for allotment of PAN. And every person who has been allotted PAN should do that Aadhaar PAN linking by 31st March 22। उसके बाद क्या बोले, 500 रुपये, कब तक, जून तक। उसके बाद
1000 रुपये। समझ में आ रहा है क्या बेटा? दैट्स इट। ये देखो 1 अप्रैल 23 के बाद क्या होगा, ये इनवैलिड हो जाएगा, प्लान विल बिकम इनऑपरेटिव। आर वी गेटिंग क्लैरिटी? अभी तक कुछ नहीं दिया, बोलेंगे बाद में, कुछ तो जुगाड़ करेंगे ना यार। फ्रेंड्स, गेटिंग क्लैरिटी एवरीबॉडी? किसको? सर, होल्डिंग मोर देन 1 पैन इज इलीगल। अरे कैंसिल किया मतलब वो नहीं मालूम ना, वो लोग एक्शन क्या लेने वाले हैं। तो नया पैन देंगे नहीं ना ये लोग। बट एक्चुअली आजकल बहुत सारे लोग एक जनरेशन में थे, मेरे पेरेंट्स जनरेशन में, जो इसके बाद 2-2 पैन 3-3 पैन भी है। फॉर एग्जाम्पल, माई नेम इज टी शिवा तेजा। तेजा इज नॉट माई सर नेम, आई हैव गॉट सम अदर सर नेम टी शिवा तेजा। ओके, टी का पूरा नाम लिख के शिवा तेजा, ऐसा भी एक पैन कार्ड ले सकता था मैं, लिया नहीं कभी, अभी हो नहीं सकता वो, नाउ टेरिफिक मैचिंग इज हैपनिंग। बट पहले सिस्टम वॉज वेरी वीक बॉस, वेरी वीक। लोग जो मन में है वो कर लिए। समझ में आया क्या? 2-2 पैन कार्ड ले लो, एक जगह दूसरा पैन कार्ड दो, दूसरा पैन कार्ड दो, और बताओ मत इनकम टैक्स को। समझ में आ रहा है एवरीवन? इमेजिन इफ यू ओपन ए बैंक अकाउंट एंड विदाउट पैन, देन जितना भी पैसे उसमें आ रहे हैं, बंदा टैक्स भरेगा क्या? नहीं बॉस। द मोर लिंकिंग विल हैपन, द मोर people will be more cautious. Yes, see. See this part, no? If PAN has become inoperative, what will happen then? He will not be able to file the return. Returns will not be processed. Refund will not be issued. Tax will be required at higher rate. All the problems are there. Tax at higher rate, matlab, generally, for example, when expert is paying to me, what is the TDS rate? 10%. Why 194? J. If I don't have PAN, TDS rate is 20%. Problems will start coming there. समझा क्या? क्रेडिट कैसे मिलता? मेरा पैन ही नहीं है तो। अरे मेरे को क्रेडिट आना मतलब वो लोग मेरे पैन पे फाइल करना ना, मेरे पैन पे फाइल ही नहीं करेंगे तो मुझे क्रेडिट कहाँ से आएगा? प्रॉब्लम इज दैट, नो। आप बिल्कुल मत पूछो मेरे से, सर उनको कैसे मालूम आपके पास पैन है नहीं है? वो मेरे से पूछते ना पैन, और मेरे पैन जब इनवैलिड हो जाएगा, वो पैन एंटर करेंगे तो सिस्टम एक्सेप्ट नहीं करेगा। कुछ भी पप्पा के पढ़ाई नहीं मेरा इधर। सार्वी क्लेम दिस। यार बोलना बेटा, क्या ऐसा कर रहे हैं आप लोग? जवाब दो यार। कमान 139.1। अरे ऐसा चेहरा मत बनाओ यार, बोलो यार अच्छे से। एग्जैक्टली 139.9, 139.3, 139.4, 139.5, 139.9, 139A, PAN, 139AA, Aadhaar, 139.8A, updated return, 234F, late fee for late filing of return, 234H, late fee for linking of Aadhaar. यार बोलना यार, ऐसा रोते रोते क्यों बोल रहे हैं यार आप लोग? डन। 139B, there is something called tax return preparer. चलो बेटा, what is the word? Tax return preparer. Once upon a time top people, but now no value. The reason what I'll tell you, there is something called TRPs. They are the authorized persons to file the return of income on behalf of assessee. Chartered accountant shouted, क्या हम क्यूट लोग हैं क्या? Then government told,
TRP cannot file return for whom tax audit will apply. समझे क्या? See now. Excuse me. This section has been inserted for purpose of enabling any specified class of persons to prepare and furnish return of income through a tax return preparer authorized to act under the scheme. क्या वो? What was it? चलो guys. Tax return preparer scheme. This scheme is not applicable for what, sir? Company or a person who is required to undergo what, my dear friends? Tax audit or right under any other law. सब कुछ वही करेंगे तो अपन क्या करेंगे यार? CA लोग. Then who are not authorized to act as TRP, officer of a scheduled bank with which assessee maintains a current account or has regular dealings, legal practitioner, lawyer. Third, chartered accountant. Fourth, employee of the specified class or class of persons. Clerical mistake, please ignore. Ignore. अरे नहीं लिखता. Done. So clear with this part, everybody? अरे ये क्या नमूना है रे? चलो. What is 139.1? Due date of return of income and compulsory final return of income. 139.3. Return of loss. 139.4. Belated return. 139.5. Revised return. 139.9. Defective return. 139A. PAN. 139AA. Aadhaar. 139B. Tax return preparer. 139.8A. Updated return. 234F. Late fee for delayed for return of income. 234H. कितना लेट फीस? 500. कब तक? 30th जून तक. 30th जून 22 तक. उसके बाद 1000 रुपए. Done. Next, last section in this topic, section 140 and 140A. I think you already know, sir. Let me tell you, that is something called self-assessment tax. If you don't remember, let me make you recall. When you file return of income, when you file what, beta? Imagine your tax payable is 1 lakh. TDS is 30,000. Advance tax is 30,000. बाकी कितना पे करना है? 40,000. This is called self-assessment tax. The tax payable at the time of filing return of income. The tax payable at the time of filing what? Return of income is called self-assessment tax. Are we getting clarity, everybody? Friends, please reply. Come on. All of us clear with this? Chalo, get back. What is 140? Signing of return. Chalo. Who must sign the return? Apply logic and tell. Individual. He will only sign. But before we proceed to that, I will tell you an important point. Listen. Mode of filing. Mode of filing. Listen. Carefully listen, everybody. In case of companies and in case of other than companies subject to tax audit. Chalo beta, what are the 2 points? Companies, number 2, other than companies subject to tax audit. What they told is, please do e-filing with digital signature. What is digital signature, beta? A small token pen drive will come, will connect to system and click digitally signed. Special pen will not come to sign. ऐसा पेन लगाए एक्टिवेट हो गया, ऐसा नहीं होता है.
समझना बेटा. Next, other cases, e-filing with or without, with or without what beta, with or without what, digital signature. And if you file without digital signature, if you file what, my dear friends, without digital signature, then law told you please e-verify the return using Aadhaar OTP or using net banking OTP और यूजिंग डीमैट ओटीपी. इतने ऑप्शन है आपके पास. समझ में आ रहा है क्या बेटा? कुछ भी नहीं हो रहा है. लास्ट ऑप्शन, साइन द अक्नॉलेजमेंट. साइन व्हाट बेटा? अक्नॉलेजमेंट एंड सेंड टू CPC Bengaluru. What is CPC? Centralized Processing Centers, Bengaluru, within 30 days from the date of filing. उनको भेजो, वो लोग देख लेंगे. You might ask, सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है सर? आधार OTP. प्रिंट लेना क्यों, बेचना क्यों, ये सब टाइम पास क्यों? उसको फोन करो, OTP लो, खत्म करो. बट कभी कभी काम नहीं होता इससे, क्योंकि OTP लेट आता है. OTP एंटर करते एक्सपायर हो गया, सिस्टम का एरर इशू है, OTP जनरेट ही नहीं हो रहा है, आधार में फ़ोन नंबर अपडेटेड नहीं है. दुनिया भर का प्रॉब्लम्स है इंडिया में. लिख लो फटाफट, कम ऑन. यस उमेश, यस. हो गया क्या? Friends, are we done?
Friends, are we done? Chalo, get back. Let's see the last section. Come on. 140. Come on, what is section 140? Signing off, return. Individual, who is supposed to sign? Individual himself. If he is absent from India, still he can only sign. No, what is the problem? Distress nature to ho jata na. But any person duly authorized by him in this behalf, holding valid power of attorney. If he is mental fellow, mentally incapacitated, then guardian or any other person competent to act on his behalf. Next, last point. Any other reason is not possible to sign. Person holding valid power of attorney. HUF came in exam 2 times. Who will sign? If Karta is absent or is mental. Any other adult member. In exam, a question has come true or false. If Karta is absent from India, written is to be signed by any adult male member. Student wrote yes, of course, only adult male. Why emotion? Why so much of ego? Stop discrimination. Next. Company, who will sign? Managing director, if he is not available, any director. Any director. And if company is a non-resident, that means foreign company, a person who holds a valid what? Power of attorney. And if company is being wound up, liquidator. समझ में आ गया बेटा? Next. If management of company has been taken over by the government, who will file? Principal officer. Partnership firm, who will file? If he is not available, any partner except Chotu. Don't touch Chotu. Local authority, principal officer. Political party, chief executive officer. Any other association, any member or principal officer. LLP, who will sign? This is important point. Please put a star mark. Designated partner. In partnership firm, we say managing partner, but LLP we say designated partner. And if he is not able to sign and verify, what is the answer? Any other partner? So getting clarity? क्या? नहीं पूछते ये लोग. Not tell you. Any other person, that person or some other person competent to act on his behalf. Next. Self-assessment tax. ये तो समझ गए ना आप लोग? Self-assessment tax is nothing but the tax payable at the time of filing what? Return of income. Tax payable at the time of a return of income. What tax you call it, sir? Self-assessment tax. So clear with this point, everybody? Friends, please speak out. Come on, what is 234A? Interest. What is the interest rate? 1% per month or part thereof. 234F. Late fees. Kitna hai late fees? 5,000. And total income does not exceed 5 lakh. How much better? 1,000. So getting clarity, everybody? So please speak out. Come on, guys. What is section 139(1)? Due date of return of income and also who is required to file return of income. 139(3). Return of loss. 139(4). Belated return. 5. 9. Defective return. 139A. PAN. 139AA. Aadhaar. 139B beta. Tax return preparer. He cannot do for companies and also for tax audits. Next, 139(8)A. Updated return. 140. Who can sign the return? 140A. Self-assessment tax. And let me tell you, 140B is tax on updated return. 139(8)A is concept. 140B is that 25%, 50% wala 140B. समझ में आ रहा है क्या बेटा? Everybody, my dear friends, that's it. That's the story of return of income. I'm sure we got a good clarity on this topic, my dear friends. Everyone, sure. Let's take a short break. After break, we'll talk more. Yes, get back, guys. So, friends, we are done with discussion with the concept of return of income. Now, let's look at the next discussion, my dear friends. Come on, please cooperate. Tell me, guys, what is section 139(1)?
due date of return of income, and also talks about who has to file return of income mandatorily. 139.3 return of loss. 139.4 belated return. Belated return का time क्या है बेटा? Within 3 months prior to end of relevant assessment year or completion of assessment, whichever is earlier. 139.5 revised return. Very good. 139.9 beta. Defective return. If there is a defect in the return, what will happen? ABA will give a notice and give how many days time? Very good. 139A PAN. 139 AA Aadhaar. And if you don't link Aadhaar with PAN, what will happen, my dear friends? There is a late fee under 234H. कितना है late fee बेटा? 500 up to 30th June 22. After it is 1000. 139B tax return preparer. He cannot file for two people. Number one, companies. Number two, tax audit cases. Next, 140. Authorized person to sign the return. 140A, self-assessment tax. Good. 139A, updated return. 140B, tax on updated return. कितना बेटा tax on updated return? If you file within 12 months, 25%. File within 24 months, 50% of what? Total tax payable. That's it. Getting clarity, everybody? Friends, reply, come on. Chalo, that's all. So friends, if you observe carefully, basic concepts is over. Status is done, exemption is done, salary is done, and exemption I'll talk something called 10AA. That also I'll talk with you. Then HP done, PGBP done, capital and assets done. Return of income is also over. Deduction में थोड़ा सा बाकी बाद में बात करेंगे अपन. ठीक है? Let's quickly complete one's deductions, my dear friends. Are we ready? Everybody, sir? Chalo. Let's once quickly revise, then we'll start. With respect to deductions. चलो बेटा बोलो. Deductions में क्या क्या बताया आपने को? ATGGB, what is that? Company to political party. GGC, other than company to political party. TTA, interest on savings bank account. कितना है deduction? Interest or 10,000, whichever is lower. दोस्तों बराबर है ना? Next. ATTTB, what is the answer? It is only for senior citizen. कितना बेटा deduction? Interest or 50,000, whichever is lower. दोस्तों yes or no sir? Any interest for senior citizen. Next. और कुछ पता है आपने को? वो बात नहीं करे अभी तक. बराबर है ना? Now listen. Let's start. Sir, let us discuss now. Starting with ATC. What do you think is covered in ATC? बोलो. There is something called tuition fee for full-time education. I repeat again. Tuition fee for what beta? Full-time education for 2 children in India. Tuition fee for what? Full-time education for 2 children in India. For example, your parents are paying CA coaching fees. That is not full-time education. This is only part-time private coaching. Next. Something called Provident Fund. And something called Tax Saver FD, which has got a lock-in period of 5 years. समझेगा बेटा? Then repayment of principal amount of housing loan. So getting this language, everybody? Friends, come on, please reply. Repayment of what? Principal amount of housing loan. Next. PF में ही PPF, RPF, SPF सब आएंगे उसमें. Then what else? सुकन्या समृद्धि स्कीम. अरे वो तो इसमें कवर है ना बेटा. Then what else? Subscription to bonds of NABARD, National Bank for Agriculture and Rural Development. Finally, let me talk about the core important point. That is your
life insurance premium. I'm sure we guys know very clearly that life insurance premium is covered in 80C, medical insurance is covered under 80D. Barabar hai na? Now see. Now when I talk about life insurance premium, my dear friends, there is a lot of importance for this. Listen very clearly. Life insurance premium, we'll divide them into three types. Case number 1. Policy taken before 1/4/2012. Case number 2. Policy taken on or after 1/4/2012. Last case, policy taken on or after 1/4/2013 for disabled. That means lucky people like us, we are covered only in first point, second point. Getting clarity, my dear friends? And if policy is taken before and 2012, my dear friends, deduction is equal to maximum 20% of what? 20% of what, my dear friends? Sum assured. And sum assured refers to policy value excluding bonus. Sum assured refers to what value, sir? Policy value excluding bonus. And if policy is taken on or after 1/4/2012, deduction is equal to maximum 10% of sum assured. And if policy is taken on or after 1/4/2013 for what? For what, my dear friends? Disabled persons. Deduction is maximum 15% of sum assured. इसमें covered. मतलब a disabled person between 12 to 13 he has taken policy, he is covered in second point. He has taken before 2012, he is covered in first point. Sir, clear with this point, everybody? Let's take an example to understand this properly. Listen very clearly. Sir, Shiva Teja has taken a policy on 1/6/14. Taken a better? Sum assured 30 lakh. ठीक है? Premium payable per annum is equal to, let us say, 1.8 lakhs. Or let me do something. Premium payable per annum is, let us say, 4 lakhs. कितना है per annum premium? Law is telling deduction is equal to maximum कितना? 10% of sum assured, which is nothing but 3 lakhs. And this 3 lakh is again restricted to 1.5 lakh because ATC has got a maximum limit of 1,50,000. समझ में आ रहा है क्या बेटा? एक मिनट लिखो मत, फिर से सुन लो एक बार. On maturity, after some time policy will mature, no? On maturity, what will happen is it will become taxable. The reason being, premium payable every year is more than 10% of sum assured. Premium payable every year is more than what? 10% of sum assured. Next case duty. Shiva Teja, I have taken a policy on 1/6/16. Taken a beta. Sum assured 40 lakh.
premium per annum is 1 lakh. Or let us say premium per annum is 2 lakh. Deduction कितना बेटा? Which is nothing but 2 lakhs. ये maximum है ना भाई. And this 2 lakh is again restricted to 1.5 lakhs. And finally, on maturity, what will happen is exempt under the section called 1010T. Why maturity is exempt? Because premium payable does not exceed 10% of sum assured. So if the premium is more than 10% of sum assured, you will get deduction of 10% sum assured. Maturity amount is again taxable. But if the premium is less than 10% of sum assured, maturity amount is exempt. And you understand that if policy is taken before and for 2012, it is 20% of sum assured. On or after 1 for 2012, 10% of sum assured. On or after 1 for 2013, 15% of sum assured. If the person is disabled. समझ में आ रहा है क्या बेटा? आदित्य, very important. Take the example. Friends, are we done? Chalo, come on. So if policy is taken before and for 2012, what is the answer? 20% of sum assured. On or after 1 for 2012, 10% of sum assured. On or after 1 for 2013 for disabled. That's it. I think we got a full clarity on this point. That's it. That is the story of which section, my dear friends? 80C. Now, there is something called 80CCC, which we practically don't use much. That is your LIC pension fund. LIC deduction is maximum 1.5 lakhs. But we don't use this section much because of some reason.
That is because 80C plus CCC plus CCD, again all put together is again 1.5 lakhs. That's a fundamental reason why. Yeah. 80 CCC LIC benchmark कितना मिलेगा maximum beta? 1.5 lakhs. Are we clear with this point, everybody? Sure, now listen. Sir, let me talk about some important section. 80 CCD. Just listen first, then you can write. I'll divide that into 3 parts. Listen very clearly. 80 CCD1, 80 CCD1B, 80 CCD2, 80 CCD1 is employee contribution. CCD1B also is employee contribution. First we'll separate 50,000. Employee contribution is restricted to maximum 10% of salary. Salary means basic plus DA if part of salary for retirement benefits and all. 80 CCD2 is the employer contribution. For employer contribution, employee is taking deduction. पहले income में जाएगा, फिर deduction भी आ जाएगा. And first is the benefit, no. So speak out, sir. It is considered as income of what beta? Employee. And then deduction under section 80 CCD2 is allowed. And 80 CCD2 says maximum 10% of salary. And 14% of salary in case where he is a central government or state government employee. Central government 14% of salary. So getting clarity, everyone? So let's take a scenario like this so that full clarity will come. Listen very clearly here. Sir, imagine a case where employee salary is 10 lakh. Okay? Employee contributed 1.8 lakhs. And employer also contributed 1.8 lakhs. And he is a private employee. So what will happen? This 1.8 lakhs, law is telling straight away, अब 1.8 lakhs में से सीधा 50,000 सेपरेट करो और ले लो 80 CCD1B के अंदर. समझ में आ रहा है क्या बेटा? First separate 50,000 and take under which section? CCD1B. What is the balance left out? This 1.3 lakhs is restricted to 10% of salary, which is nothing but 1 lakh. समझ में आ रहा है क्या बेटा? And this 1 lakh I will take under CCD1. And this employer contribution I can take deduction under 80 CCD2, which is again 10% of salary, which comes to 1 lakh. You might ask, sir, why all this time pass we are doing? There is a fundamental reason why we are doing this time pass. The fundamental reason why we do this time pass is because 80C plus 80CCC plus 80CCD1 all put together maximum 1.5 lakhs. समझ में आ रहा है क्या बेटा? बोलने के लिए बोल रहे 1.5 लाख एंजॉय करो, बट C plus CCC plus CCD1 कितना बेटा? मैक्सिमम 1.5 lakhs. This point is given by 80CC, 80C plus CCC plus CCD1 all put together 1.5 lakhs. Are we getting clarity, everybody? That is the reason why first we'll always separate 50,000. आप मुझे clearly बोलो वो 1.5 लाख का जो बॉक्स की बात कर रहे हैं हम, C plus CCC plus CCD1 is 1B covered there. In the box of 1.5 lakh is 1B covered. That is why we are separating 50,000 first and taking under 1B. So that वो 1.5 लाख छोड़ के 50,000 तो आएगा ही आएगा. So speak out, my dear friends. Everybody, sir. Basically, we are talking about pension scheme of central government. We also call it as NPS, National Pension Scheme. So getting clarity क्या? So in short, what we are trying to do is, जितना employee का contribution रहेगा, first 50,000 separate करेंगे. And किधर लेंगे? CCD1B के अंदर. Balance जो रहेगा, वो 1 के अंदर लेंगे, restricted 10% of salary. जो employer contribution है, उसका भी कितना लिमिट है बेटा? 10% of salary. वो CCD2 के अंदर है. और अपने को याद क्या रखना है? C
CCC, CCD 1, all put together 1.5 lakhs. Getting clarity? Very important point. Take it. Are we clear? Full clarity?
Yeah, friends, are we clear with this concept, everybody? यार दोस्तों बोलो ना यार. And one point, let me tell you, if the person is not an employee but is a self-employed person, next Shiva Teja, then the limit is not 10% of salary, limit is 20% of GTI. 20% of Niklo no take. In case of self-employed individual, in case of self-employed individual, in case of self-employed individual, it is 20% of GTI. ठीक है ना? डन बेटा. चलो बोलो बेटा क्या क्या सेक्शंस हो गए अपना. 80C, CCC, आर यू सीइंग और नॉट? हाँ, CCD 1. सबसे पहले 1 निकालने से पहले क्या सेपरेट करेंगे? CCD 1 पे 50,000 सेपरेट करने का लॉजिक क्या है? तीनों मिलके फिर से 1.5 लाख. ये लोग ऐसा लोग हैं यार, ऐसे दे रहे 1.5 लाख फिर बोल रहे पूरा मिलके 1.5 लाख. समझ में आ रहा है ना बेटा? नेक्स्ट CCD 2 क्या है? एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन. समझ में आ रहा है क्या बेटा? डन. सी का कहानी खत्म. नेक्स्ट AD D, वन ऑफ माई फेवरेट सेक्शन. क्या है बेटा ये? दिव्या याद है कुछ? ATD क्या है बेटा? मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम. बोला बेटा मेडिकल इंश्योरेंस का क्या सीन है? First of all, it should be paid by any mode. Wonderful. That is the first fundamental point. It should be paid by any mode other than cash. And I'll divide that into 2 categories. Self, spouse, and dependent children. चलो बोलो बेटा क्या लिखा मैंने? Self, spouse, and dependent children. For these people, you are paying some medical insurance, or you are contributing to central government health scheme. So clear my dear friends? चलो self, spouse, dependent children तीनों मिलके मैक्सिमम कितना है बेटा? 25,000. And if anyone senior, क्या लगता है बेटा? 50,000. Other side, there is a separate deduction with respect to parents, and parents need not be dependent. I repeat again, parents what बेटा? Need not be dependent. And parents का कितना लिमिट है मैक्सिमम? 25,000. समझ में आ रहा है क्या बेटा? And if anyone senior, 50,000. Children should be dependent, but parents what? Need not be dependent. And there is deduction allowed even for preventive health checkup. क्या checkup बेटा? Which is maximum 5,000. And this preventive health checkup can be paid in cash also. समझा क्या? I repeat again, preventive health checkup can be paid in what, my dear friends? Cash also. And this 5,000 is for both put together. This 5,000 is for both put together. अभी समझ में आ रहा ना? Friends, are we getting clarity on this point, everybody? Let's take an example to understand this in the best possible manner. Okay? Now listen. Listen, my dear friends. Sir,
self age 34, 14,000. Spouse age 32, 10,000. Child age 5 years, 11,000, 9,000. Child age 5 years, 3,000. बोलो ना यार. Daughter aged 10 days, nil. Father 60 years, 28,000. Mother 54 years, 16,000. समझ में आना बेटा. नेक्स्ट, प्रिवेंटिव चेकअप 4,000. and here preventive checkup 3,000. समझे क्या बेटा. and this is paid by online, this is paid by check, this is paid by DD, this is paid by cash, this is paid by Google Pay, this is paid by Phone Pay, this is paid by Paytm. Are modes of payment okay है क्या. समझे क्या सर. प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आई गिव. नेक्स्ट, टेल मी गाइस, 11,000 मिलेगा क्या. यस. 9,000 मिलेगा क्या. 3,000 मिलेगा क्या. पूरा मिलेगा कितना. प्रिवेंटिव चेकअप कितना है. बट विल कैन टेक ओनली 2,000 because that 5,000 is within the limit of 25,000. नेक्स्ट, पेरेंट्स क्या सीन है. 28 मिल जाएगा, 16 मिल जाएगा, टोटल कितना है 44. लिमिट कितना है. अरे यार बोलो ना यार, लिमिट कितना है. 50,000 भाई. इफ एनीवन इज सीजन 50,000, 60 एंड अबव. चलो प्रिवेंटिव चेकअप कितना 5,000 चलेगा ना. द आंसर इज 3,000. क्यों. ये दोनों मिलके 5,000. दैट्स इट. ओह मैन, क्लियर. लिखना है क्या एग्जाम्पल. लिख लो, खत्म करो. हो गया 80T. Yes, Mr. Aditya. How are you? Vedant, how are you, dost? अभी समझ में आया क्या. पहले वाला. यस उमेश, आई एम फाइन. हाउ आर यू. साक्षी जी कैसे हो. यस नित्या, आर वी क्लियर. हाउ इज नेचुरल्स. ध्यानराज भाई क्या हो गया. पराठा खा के एकदम नाराज हो गया क्या.
Praveen Motegonkar, how are you? Rahul Jakotia, कैसा है भाई? What is it? Jakotia, sorry my dear friend, sorry. Rahul Jakotia, how are you? Vedant Shaji, कैसे है सब? How is family? What is it? Sarga? Yeah? Hmm. मतलब वेरी वेरी ग्रेट सर, मजे में सर. फ्राइडे, फ्राइडे नहीं है रे, मंडे है रे आज. मतलब व्हाट डज दैट मीन? नहीं, ठीक है. वेदांत इज टेलिंग सर ऑल गुड, डोंट वरी, आई टेक केयर ऑफ आदित्य. यस गुड, ठीक है, हो गया ना. टाइम पास कर रहा था 2 मिनट ऐसे ही, लेकिन आप लोग डन बेटा डन. चलो आ जाओ, वापस आ जाओ. बोलो बेटा ITC क्या है बेटा, इसमें क्या क्या पॉइंट्स पढ़े थे हम लोग, याद करो एक बार. देखो मत, बिना देखे बोलो. प्रोविडेंट फंड, ट्यूशन फीस फॉर फुल टाइम एजुकेशन फॉर 2 चिल्ड्रन, और प्रोविडेंट फंड, नाबार्ड, LIC, प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन, ये सब ATC के अंदर ही है. कितना लिमिट ATC का मैक्सिमम? 1.5 लाख. ADCCC, LIC पेंशन फंड, टाइम पास सेक्शन. CCD1, ये भी टाइम पास है. और इससे खतरनाक सेक्शन है CCD1B. व्हाट इज दैट? सेपरेट 50,000. वेरी गुड. CCD2, employer contribution. First we'll take it as income and then take deduction. कितना deduction maximum? 10% of salary. Central government, state government employee, 14% of salary. What is ATCCE? Together, this bucket. What is the bucket? C plus CCC plus CCD1 bucket. All put together 1.5 lakhs. ATD, medical insurance. चलो बेटा. ATDD, ATU. ATU, self disability. ATDD, dependent disability. And who will come under dependent? Spouse, children, brothers, sisters, parents. Only if they are wholly or mainly dependent. Don't tell grandfather, grandmother and all. Spouse, children, brother, sister and parents. चलो बेटा, क्या लगता है आपको डिडक्शन? फॉर a dependent disabled, you have spent money for medical treatment, or you have taken some life insurance for them, or you have taken some insurance for them. Law is telling complete deduction will come, and that too we have got a flat deduction. मतलब कितना खर्चा करते उसे लेना देना नहीं है, हम सीधा डिडक्शन देंगे बॉस 75,000. सिवियर डिसेबिलिटी, क्या लगता है बेटा आपको? कुछ याद नहीं आ रहा क्या? 1,25,000. Severe disability means more than 80% disabled. Who will certify that? Doctor. He will tell hands gone 30%, legs gone 60%, head gone 100%. The doctor will decide, you don't worry. Next, self disability, same story, 75,000. And severe disability, क्या है बेटा? That's it. So ATTD, ATU limits are same, पर दोनों में फर्क क्या है? That's it. If we are only disabled, ATU. If somebody is there dependent on us and they are disabled, ATU, ATTD. समझे ना बेटा? Friends, can I move forward?
Next, 80 DDB, medical treatment for specified diseases. We have got list of diseases given in the law. Leukemia, cancer, tuberculosis, so many list of diseases are given in the law. Dystonia, musculonia, deformans, Parkinson's disease. Some names are only dangerous. In fact, that disease is also even more dangerous. नाम ऐसे रहता है. I know one person who has got this Parkinson's disease. Parkinson में क्या होता है? मतलब there is no hand-body coordination. Motor controls will not be there. मतलब they think that hand is moving, but hand is actually not moving. There is no what you call nervous system will not support and send the message. Motor control is not there in the body at all. हम ऐसा हाथ उठाते लगता है हाथ उठा रहे और ऐसे रहता है फिर भी उसको लगता है हाथ उठा रहे बस उठा ही नहीं. There is a lack of motor skill. That's very dangerous man. उससे अच्छा तो वो चले जाए. ठीक है ना? Anyways, 80 DDB is what? Specified diseases. And what they told in the law is deduction is amount spent or 40,000, whichever is lower. Senior, what better? Amount spent or 1 lakh, whichever is lower. Normal disease is fine, boss, but that Parkinson's is so dangerous. No coordination between body and brain means how dangerous it is. What is it? अरे थोड़े डिसीजेस का नाम तो थोड़े तो पहली बार सुना लाइफ में मैं तो. उतना डिजीज उतना डेंजरस रहता. We'll never know. See, this health issues are something which we don't know generally. अपने को सिर्फ क्या पता है आज की डेट में? कोल्ड, कॉफ, कोरोना, सब कॉमन हो गया आजकल. उतना तक पता है, बट आगे वेरी इजी टू प्रोनाउंस कोल्ड, कॉफ, फीवर. और ये सब नाम तो डेंजर है. एड्स, acquired immunodeficiency syndrome, and people think that AIDS will come only for 1-2 particular reasons. It's not like that. Imagine a blood is injected. I mean, a syringe is used for giving injection to a patient, and by mistake the same syringe is used for other person's body. Still AIDS will come. Don't just have a wrong reason for AIDS. There are multiple reasons why AIDS will come. Exactly. Anyways, कोई बंदा बोल रहा है ऑनलाइन में, क्या बोल रहे हैं? Rabies disease. That is also possible. Rabies from the dogs will get, no? ठीक है. Anyways, वेदांत क्या डॉट पूछ रहा है बेटा? So can we take deduction for DD and DDB both together? Yes, possible. Possible है बेटा. Next. सब क्लियर है? चलो बेटा, क्या क्या हो गया अभी तक? AD, C, CC, C. Are you seeing or not? CCD 1, CCD 1B, CCD 2, 80D is over, CC is also over. CC तो ये तीनों बॉक्स, 80D, DD, DDB, U, GGB, GGC, TTA, TTB. ठीक है ना बेटा? दोस्तों, now let me complete something called QQB, RRB. क्या बेटा? QQB is royalty on books. An important point to be noted is deduction what we get is royalty or 3 lakh, whichever is lower. So 1 second, listen here, don't write, just 1 minute. If it is lump sum royalty, we will consider entire royalty. And if it is percentage, then maximum 15% is allowed. Matlab meaning is what? Imagine sales are 1 crore. Okay? And the royalty what we got is, let us say 20%, which is 20 lakh. Even though we got 20 lakhs, law is telling we'll consider only
15 lakhs फॉर डिडक्शन पर्पस. इनकम में तो 20 लाख ही जाएगा. डिडक्शन पर्पस विल टेक 15% ओनली. समझेगा बेटा. एंड इफ रॉयल्टी इज कमिंग फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, then it must be received within 6 months. Good. समझेगा बेटा. And next section is very simple. RRB, royalty on patents. इसमें तो 15% ये सब कुछ भी नहीं है. सीधा डिडक्शन इज द रॉयल्टी व्हाट वी गेट और 3 लाख whichever is lower. समझे क्या बेटा. दोस्तों एक बार एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आया, सुन लो ध्यान से, देन यू कैन हैप्पीली राइट इट. रॉयल्टी actual is 18%. Actual is what? 18%, which is क्या फिगर था उसमें, 15 lakhs into 18% करो, 2 lakhs. This is the actual what we received, and the expenses what we incurred is 40,000. ठीक है ना. Therefore इनकम में कितना जाएगा बेटा, 2,30,000. यार दोस्तों समझ में आ रहा है क्या. इनकम में तो 230 जाएगा. यार तक क्लियर है दोस्तों. एंड हाउ मच इज 15%? 18% 270 है, तो 15% कितना है, 2,25,000 माइनस एक्सपेंस कितना है, 40,000. डिफरेंस कितना है, सो 185 और 3 लाख whichever is lower you will get as deduction, which is 1,85,000. सर पॉइंट इतना ही है, जब आप डिडक्शन कैलकुलेट करेंगे आप रॉयल्टी का परसेंटेज 15% ही ले लो, उसके ऊपर है तो डिडक्शन नहीं देंगे हम. क्या बोल रहे हैं. ठीक है, ऑब्वियसली. हाँ सेम लॉजिक है ऑल्सो. मतलब मैक्सिमम 3 लाख ही मिलेगा ना. सर ये एग्जाम्पल समझ में आया सबको दोस्तों. प्लीज इंपॉर्टेंट. अगर 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 समझो, सुनो बेटा एक बार, अगर 270 में 270 में सिर्फ 230 ही इंडिया में आया 6 मंथ्स के अंदर, फिर क्या लेंगे हम, 230 इंटू 15/18. सर अल्टीमेटली इंडिया में जितना आया उसका 15%, उसका 15% मतलब रॉयल्टी कितना आया, हाउ मच इज दैट, हाउ मच इज 15%. अगर रॉयल्टी 10% है तो प्रॉब्लम नहीं, जितना आया उतना. Obviously, if it is lump sum, then all this working will not come. If it is lump sum, how much ever we got, or 3 lakh, whichever is lower. खत्म. ये सब 15/18 ये सब करने की जरूरत ही नहीं है. ये 15% कहानी तभी आएगा अगर आपका रॉयल्टी परसेंटेज में है तो. If royalty is in lump sum, then all this story only will not come.
समझ में आएगा बेटा ये क्यों भी RRB? फ्रेंड्स, आर वी क्लियर विद दिस पॉइंट एवरीबॉडी? सबको समझ में आया क्या ये? एवरीवन, चलो. So we're done with 80 QQB, 80 RRB, 80 TTA, 80 TTB, GGB, GGC. Now listen, there is something called GGA also, where expenditure is incurred for scientific research or rural development. And this is applicable only for assessees who are not having PGBP income. लॉजिक सिंपल है, अगर आपके पास PGBP इनकम है आप सेक्शन 35 में डिडक्शन ले लो, इधर तक आने की जरूरत ही क्या है आपको? यू टेक इन PGBP, नो? व्हाई डू वांट दिस GGA एंड ऑल? Done. Can I proceed? Can I get into E series? E series. E series. Not Benz car. उसका टाइम है 80E. Any idea what is E? 80E is interest on loan taken for what beta? Higher education. Now what is higher education? MBA वगैरह कुछ भी जो मन में है वो बोलता है. आफ्टर 12th, yeah, anything after senior secondary examination, that is after 12th, is called higher education. And you have to understand that deduction is only for interest, not for principal, and deduction is allowed for a period of current year plus 7 years. मतलब मैक्सिमम आप 8 साल तक ही ले सकते हैं डिडक्शन. मतलब अगर आपका लोन 10 साल है पर डिडक्शन सिर्फ 8 साल मिलेगा. बीकॉम के लिए लोन कौन लेता है यार? हाँ, बट आजकल इतना बढ़ गया कि फ्यूचर में स्कूल के लिए भी लेना पड़ेगा लोन, ऐसा बढ़ रहा है फीस. I finished my entire CA in less than 1 lakh. For my son, for UKG, I'm paying 1.5 lakh. It took almost 3-4 days for me to accept the fact and reality and to digest that. स्कूल अच्छा है बट exactly. ठीक है, डन. Are you clear with this point? 80E is what? Interest on loan taken for what, my dear friends? Higher education. एक बार तो मुझे लगा ये क्यों ये सब स्कूल चुपचाप उसको बालवाड़ी में डाल देते हैं, आंगनवाड़ी में. ठीक है. हाँ, oh, say what you call it then? आंगनवाड़ी you call it? Oh, I'm sorry then. आंगनवाड़ी. एडजस्ट कर लो यार. Done. What happened?
मतलब that is what I wanted to tell. I heard this word before. Okay, balwadi. ठीक है ठीक है ठीक है. Okay okay okay. Understood. 80E is over. Now listen friends, something very important. Everybody please concentrate. We have got something called 80EE, 80EA, 80EB. Three sections I'll teach together where I'll give you clarity of thought on this concepts. And I'm sure you'll recollect very easily. 80EE is only when loan is taken during 16-17. Loan is taken during 16-17 from any bank or from any housing finance company. समझ में आ रहा क्या दोस्तों? And this is basically for your first house. And loan does not exceed 35 lakhs. Property value does not exceed 50 lakh. Law is telling we'll give you extra deduction of 50,000 on interest. 50,000 for interest. I have a question, guys. Think properly and tell me. Sir, whatever interest I am paying on housing loan, I can anyways take 24B deduction, no? For whatever interest I am paying on housing loan, I can take 24B deduction or not? Then why do I want this section then? एक्स्ट्रा क्यों? उधर ले सकते ना. जब 24B में ले सकते हैं तो ये सेक्शन का यूज ही क्या है? यस दिव्या, कुछ तो सोच के बोलो यार. If the property is self-occupied, section will be useful. Because self-occupied, we have got limit of maximum 2 lakhs. If 3 conditions are satisfied, any condition failed, 30,000. Assume all 3 conditions are satisfied. Interest is 2,40,000. कितना मिलता है डिडक्शन उधर? बाकी 40 इधर ले लो. उधर काम आते हैं. बट एक चीज समझो, हियर लोन शुड हैव बीन टेकन व्हेन 16-17. तो अभी कुछ है क्या? जो 16-17 में लोन लिए उनके लिए फायदा हुआ है. बट डबल ये करके एक सेक्शन लेके आए वेयर लोन इज टेकन बिटवीन 1/4/19 to 31st March 22. You have taken from bank or housing finance company. लोन का कोई लिमिट नहीं है यार. And value of the property does not exceed 45 lakh. Value of the property does not exceed 45 lakh. And the deduction what you will get is interest or 1.5 lakh, whichever is lower. Matlab, if I buy one house for 50 lakh rupees, and of course that is my first house, and the interest what I am paying is, let us say 4 lakh रुपए interest pay कर रहा हूँ मैं, और सेल्फ ऑक्यूपाइड है, उधर कितना मिलता सिर्फ, और बाकी 2 लाख में 1.5 लाख इधर मिल जाएगा. ऑफ कोर्स ये 31 मार्च 22 तक ही था यार. समझ में आ रहा है क्या? 80EE जो है ये इलेक्ट्रिक व्हीकल का है. कुछ याद आ रहा क्या बेटा? एंड हियर द कट ऑफ डेट्स आर 1/4/19 to 31st March 23. And here loan could have been taken from bank or from NBFC or from NBFC. लोन कितने का, गाड़ी कितने का, कोई लिमिट नहीं है. बट डिडक्शन का लिमिट है, विच इज इंटरेस्ट और 1.5 लाख, विच एवर इज लोअर. समझ में आ रहा क्या बेटा? दोस्तों क्लियर है क्या? बोलो 80EE क्या है? लोन कब लिए? 16-17. बराबर है ना? कितना सीन है? मतलब प्रॉपर्टी वैल्यू कितने का है? देखो एक बार पॉइंट देखो, कोई लिखेगा नहीं. देखो एक बार 16-17 लोन टेकन, लोन डज नॉट एक्सीड 35 लाख, हाउस डज नॉट एक्सीड. ये देखो, यू शुड नॉट ओन एन रेजिडेंशियल हाउस, मतलब पहला वाला हाउस प्रॉपर्टी है. 80EE क्या है? 19 to 22. वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी डज नॉट एक्सीड एंड यू शुड नॉट ओन एनी हाउस, मतलब फर्स्ट वाला हाउस. इंटरेस्ट पेड व्हिचएवर इज लोअर. EE क्या है बेटा? इलेक्ट्रिक व्हीकल. 19 से लेके 23 तक कितना डिडक्शन? इंटरेस्ट और
1.5 लाख, विच एवर इज लोअर। दोस्तों समझ में आ रहा है कि आपको? यार बेटा बोलो ना यार, प्लीज यार, एवरीबडी कम ऑन, प्लीज रिप्लाई ऑल ऑफ अस। पक्का? रुको एक मिनट, कोई नहीं लिखेगा, रुक जाओ एक मिनट। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है एक्चुअली, बहुत मस्त है क्वेश्चन वो, ICAI का ही क्वेश्चन है पर बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अपने पास टेक्नोलॉजी इतना है तो यूज भी कर लेंगे यार अपन, ठीक है ना यार? आप लोग बात मत करो, आप लोग बात करेंगे तो मैं बंद कर दूंगा। डोंट टॉक, इज इट? किधर था वो क्वेश्चन? इधर ही किधर तो बता। हाँ देखो यार आदित्य, क्या हो बेटा? सी नाउ, मिस्टर ए, अमाउंट ऑफ लोन 43 lakhs he has taken from हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। सैंक्शन कब हुआ? डिसबर्समेंट 15। हाँ बोलो। EEA, स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी डज हाउ मच, कितना वैल्यू? रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो 9% मतलब कितना है? 3,87,000। 2 लाख तो आपका इस प्रॉपर्टी में ले लो, बाकी 187 में से 1.5 लाख इधर ले लो। समझ में आ रहा है ना बेटा? कौन सी सेक्शन है वो? 80 EEA, वेयर लोन शुड हैव बीन सैंक्शन बिटवीन 1/4/19 to 31st March 22। दोस्तों नेक्स्ट सेकंड पॉइंट देखो, 45 लाख फ्रॉम NBFC 1/4/2020, 1/5/2020, वेरी गुड। 48 lakhs, 9% per annum। क्यों नहीं आएगा? क्यों नहीं आता? बोलो, रीजन बोलो। 48 lakhs, वेरी गुड, वेरी गुड, बिकॉज स्टैंडर्ड शुड नॉट एक्सीड 45 lakhs। अगर 44 है तो आएगा, तब भी नहीं आता, बिकॉज ही टुक फ्रॉम NBFC। बिकॉज EEA में सिर्फ बैंक और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, NBFC सिर्फ 80 EEB में चलेगा। ये पढ़ देखो, मिस्टर बी 24B तो ले लेगा, उसका प्रॉब्लम क्या है? अरे 24B तो आ जाएगा ना। देखो, लोन इज टेकन फ्रॉम NBFC, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एक्सीड 45 लाख, डिडक्शन वुड नॉट परमिसिबल ड्यू टू एदर वायलेशन लिस्टेड अबव। ठीक है ना? थर्ड देखो, NBFC 20 लाख लोन लिया, 1/4/2020, 1/5/2020, इलेक्ट्रिक व्हीकल, ठीक है, कितना है? चलेगा? वंडरफुल, चलेगा क्या? दौड़ेगा भाई। कितना है डिडक्शन? 1,50,000। यार समझ में आ रहा ना? लास्ट वन 15 लाख, पब्लिक सेक्टर बैंक 30 March 19, 1/5/19। बट बॉस, वी डोंट वांट डिसबर्समेंट डेट, वी वांट सैंक्शन डेट। सैंक्शन डेट क्या था? इलेक्ट्रिक व्हीकल में, इलेक्ट्रिक व्हीकल वाला है ना ये, इलेक्ट्रिक व्हीकल के क्या था? 1/4/19 से लेके 31st March 23 तक। डिसबर्समेंट डेट मत देखो मेरे भाई, क्या डेट देखेंगे? सैंक्शन डेट। आएगा क्या? कितना लवली क्वेश्चन है। When I saw that only I felt so good. I was like, बढ़िया क्वेश्चन है यार, अच्छा क्वेश्चन है। कराई भी था, ठीक है, अच्छी बात है। जब डिस्कस करे थे अपन, नहीं कुछ भी नहीं, क्लास में, रेगुलर क्लास में डिस्कस करे थे ना अपन, ये सेम क्वेश्चन। नहीं लास्ट नहीं हुआ था, लास्ट डे को नहीं हुआ था, पहले हो गया था। ठीक है, जो भी है, मतलब मेरे को ऐसे लग रहा है पढ़ाई में नहीं है, क्वेश्चन डिस्कस किया था आपके साथ। ये उमेश बोल रहा है, यस सर डिस्कस किए। कदम फिर, नो डाउट अबाउट इट। ऑनलाइन गाइस, आर वी क्लियर? गॉट द क्लैरिटी? अच्छा बाय द वे, अभी भाई समझ में आ गया? क्लैरिटी आ रहा है कि पूरा पिक्चर? अपन सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल याद करके गए,
और एग्जाम में पूछे 30 मार्च 19, अपन बोले ले लो 1.5 लाख, गए अपन काम से. क्लैरिटी. टॉक. व्हाट जानवी केम जो. आई नो. समझ में आया क्या तो उसको ऐसे बोलते ना, क्या बोलते, समझ में आया बोल तो. हाँ. या क्या क्वेश्चन पूछ रहा है भाई. सो बैड ऑफ यू. उस दिन काकरा तो खाया मस्त. ऐसा नहीं खाया. ठीक है, डन. क्लियर है ना दोस्तों. आर वी क्लियर विद दिस सेक्शन 80 EE and EEB. आई टॉट देम टुगेदर बिकॉज तभी क्लैरिटी आएगा, तभी दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठेगा. क्या दोस्त. यस. कैन आई प्रोसीड एवरीवन. चलो, बिफोर आई प्रोसीड लेट्स वंस रिवाइज. एडीसी. ठीक है, 5 बोलो. लाइफ इंश्योरेंस, पीपीएफ. अरे आप मत बोलो पीपीएफ, आरपीएफ, एसपीएफ नहीं. हाँ. नाबार्ड, ट्यूशन फीस फॉर फुल टाइम एजुकेशन ऑफ 2 चिल्ड्रन. गुड. एडी. सीसीसी, एलआईसी पेंशन फंड टाइम पास. सीसीडी 1 पेंशन को सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर सेपरेट 50,000. सीसीडी 1B. सीसीडी 2 employer contribution. ADD, DD dependent disability. ADU, DDB medical treatment of specified diseases, amount of 40 whichever is lower. Severe कुछ भी. सिवियर का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, सीनियर का कॉन्सेप्ट है. कुछ भी बोल रहे हैं. हाँ, अमाउंट ऑफ 1 लाख whichever is lower. ATE interest on loan taken for higher education. Double E 1617 stamp duty value does not exceed, loan does not exceed. Exactly. Deduction कितना है? 50,000 or interest whichever is lower. Double EA loan taken between 19 to 22, that is sanction date. That is sanction date. Disbursement नहीं भाई, sanction important है. बराबर है ना दोस्तों. कितना डिडक्शन. और यहाँ पे दोनों में बैंक चलेगा, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी चलेगा, एनबीएफसी नहीं चलेगा. वो किस में चलेगा? ईबी इलेक्ट्रिक व्हीकल 1419 टू 31st March 23. 31st March 23. Done. Clear no? GGA scientific research or rural development. GGB. What is GGB beta? Company to political party. Correct my dear friends. GGC other than company to political party. QQB books. RRB royalty on patents. ये बुक्स में लमसम में तो पूरा लेंगे, परसेंटेज है तो 15% का ही डिडक्शन. डिडक्शन वर्किंग के लिए 15% ही कंसिडर करेंगे. टीडीए, टीडीबी. एग्जैक्टली, दैट्स इट. आर वी क्लियर एवरीबॉडी?
Next, 80 GG, deduction in case of rent paid. This is for those who are not claiming HRA exemption. If you are claiming HRA exemption, you can't claim 80 GG exemption deduction. What is 80 GG deduction? Deduction is what beta? Least of the following. क्या है list of the following? 5,000 per month. Next, rent paid minus 10% of adjusted total income. 25% of adjusted total income. And adjusted total income means gross total income minus (112) 111A minus all deductions except 80 GG. All deductions except what beta? 80 GG. Friends, come on, which section we talking about? 80 GG deals with what? Rent paid. See here, come on. Rent paid minus 10% of what? Total income. 25% of such total income. Arrived after all deductions under chapter 6A, but before 80 GG. And what is the last limit? 5,000 per month. समझ में आ रहा है क्या बेटा? दोस्तों, आपके इसमें जस्ट टोटल माइनस क्यों नहीं करें? जी में 112 किधर भी माइनस नहीं करना इसमें. किधर भी नहीं दिख रहा ना आपको? Sir, if you see here 80G, I will teach you now in after 5 minutes. In 80G, adjusted total income they reduce 111A, 112 and 112A. But in 80GG, if you see, nowhere they wrote that word called 112, 112A, 111A. दिख रहा है आपको किधर भी? So total income they have reduced all deductions except 80GG. तो काम करो, माइनस मत करो आप. So reduce only what? Minus all deduction under chapter 6A except 80 GG. Are we clear with this point, everybody? Chalo, last section for today's lecture. That is, which section, my dear friends? 80G, which deals with deduction in case of donations. If you guys are by any chance able to recollect, there were 4 types of deduction. 100% without qualifying limit. याद रहा क्या कुछ? 50% without qualifying limits. 100% with qualifying limit. Last category, 50% with qualifying limits. And moreover, if the contribution is more than 2,000, it should definitely be other than cash.
समझे क्या बेटा? और पॉलिटिकल पार्टी उसमें तो 1 रुपये भी नहीं चलता, इधर तो सिर्फ 2,000 चलेगा, पॉलिटिकल पार्टी में तो 1 रुपये भी नहीं चलेगा। ठीक है ना? चलो बेटा बोलो, 100% विदाउट क्वालिफाइड लिमिट में क्या आता है? पीएम ऑल गवर्नमेंट फंड्स विल कम, प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड, ड्रॉट बाजू में, नेशनल आर्मी फंड, नेशनल चिल्ड्रंस फंड, स्वच्छ भारत फंड, क्या क्या? किसान सेवक, पीएम केयर फंड वो भी आता है इधर, पीएम केयर फंड। नेक्स्ट and during that Kerala floods, they have created one Kerala floods fund. याद है ना बेटा? So basically all your government schemes will come into this. And they created one fund called Clean Ganga Fund. क्या बेटा? What is that, Janvi? ऐसा बोलते क्या? ठीक है, 50% विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट, इसमें तो बहुत सारे है सर। 50% विदाउट क्वालिफाइंग में सिर्फ 4 पॉइंट है, याद आ रहा क्या कुछ? पीएम ड्रॉट रिलीफ फंड, व्हाट इज ड्रॉट? lack of water, pm drought relief fund. Then Indira Gandhi fund. Next Sonia Gandhi, Jawaharlal Nehru fund. Next क्या है? राजीव गांधी फंड, ये सभी राहुल गांधी। 100% with qualifying limit. Any charitable trust for promoting family planning, companies to Olympic Association or National Sports Association. Finally, 50% with qualifying limit, temple, church, mosque, gurudwara, charitable trust other than family planning. If it is family planning, it is covered under 100%, and other than family planning, 50%. Friends, are we done?
Everybody, come on, please reply. Now, what is the meaning of this word called qualifying limits? Now, I don't want anybody to talk. I don't want anybody to write also. Just listen. Qualifying limit, what they told in the law is 10% of adjusted total income. Now, what is adjusted total income? Gross total income minus 112 minus 112A minus 111A minus all deductions under chapter 6A except ATG. समझ में आ रहा है क्या बेटा? That is called what limit? Qualifying limit. We cannot generally say, for example, if a client is coming to us and asking, sir, I'm donating 10 lakhs to temple, can I take deduction? Answer you should tell is yes, but don't tell 10 lakhs will come. We are subject to what limit? Qualifying limit. So don't conclude anything. समझ में आ रहा है क्या बेटा? Let's take an example to understand this concept perfectly. Listen. Let us say one person, Mr. X, he is contributing to PM National Relief Fund 5 lakhs. PM Drought Relief Fund 3 lakhs. Rajiv Gandhi Fund 2 lakhs. National Sports Fund 4 lakhs. Next, one charitable trust for promoting family planning. Let us say 3 lakhs. And one temple he gave 2 lakhs. ठीक है ना बेटा? And adjusted total income, let us say for example 40 lakh. कितना adjusted total income? 40 lakh. सबसे पहले बेटा ये तो 100% है, इसका कोई डिस्कशन नहीं है. ये तो 50% है, कोई डिस्कशन ही नहीं है. इसका भी 100% कोई डिस्कशन ही नहीं है. राजीव गांधी ना, सॉरी, राजीव गांधी फंड इसका 50% है. नेशनल स्पोर्ट्स फंड इसका 100% है. नेशनल स्पोर्ट्स फंड लिखा ना, स्पोर्ट फर्स्ट वाला कैटेगरी कवर्ड है. नेशनल स्पोर्ट्स फंड इज कवर्ड इन फर्स्ट बॉक्स. नेशनल इज द गवर्नमेंट फंड. नेशनल आर्मी फंड, नेशनल स्पोर्ट्स फंड, ये फर्स्ट बॉक्स में कवर्ड है. हाँ एग्जैक्टली. अभी देखो ये दोनों भी क्वालिफाइंग लिमिट वाले हैं. दोनों मिलके कितना है? This 5 lakhs is restricted to qualifying limit, which is 10% of 40 lakh, which is equal to 4 lakhs. Now, how will you calculate deduction? Contribution to whom? What is the amount you contributed? What is the qualifying limit? What is the percentage of deduction? What's the deduction you will get? First, temple का 100% है या family planning 100% है? Family planning. So first give preference to family planning. Charitable trust for promoting family planning. समझ में आ रहा है क्या बेटा? कितना contribute करें? Qualifying limit 3 lakhs. मतलब पूरा आ जाएगा ना? Percentage. Deduction 3 lakhs. Temple कितना donate करें? बराबर है ना? पर qualifying limit कितना है? 1 lakh. समझ में आना बेटा? Deduction, which is 50,000, which comes to 3.5 lakh. Student is telling, सर पहले टेम्पल लेके फिर फैमिली प्लान ले लो ना सर, क्या फर्क पड़ता है? बॉस फर्क डिडक्शन में बहुत फर्क पड़ेगा ना यार. फैमिली प्लान तो 100% वाला है, टेम्पल 50% वाला है. अगर आप टेम्पल पहले लेंगे तो 2 लाख लिमिट उधर ही एग्जॉस्ट हो जाएगा. 2 लाख लिमिट, 2 लाख का क्वालिफाई लिमिट यूज करे 50% मतलब 1 लाख आएगा. बाकी 2 लाख का 100% मतलब 2 लाख आएगा. 2 + 1 3 लाख से आएगा. बट ऐसा करने की वजह से 3.5 लाख आ रहा है ना. इसे 3.5 लाख आए ना आपको दोस्तों. So it's always advisable that first to adjust towards 100%. So this qualifying limit, whatever I'm telling about, this qualifying limit is for both 100% and 50%, both items put together. 100%, 50%, both items put together, this qualifying limit will apply. Full clarity, everybody?
All of us, my dear friends, very, very important points. इसमें क्वेश्चन देखो. Just see here, come on. कितना है ग्रॉस टोटल इनकम? राइट. प्रीमियम पेड टू इंश्योर द लाइफ ऑफ आवर मेजर डॉटर. वेरी गुड सर. लाइफ इंश्योरेंस में सेल्फ, स्पाउस, चिल्ड्रन तीनों पे चलते, पेरेंट्स नहीं चलते. मेडिकल इंश्योरेंस में पेरेंट्स चलेगा क्या? हाँ, मेडिकल इंश्योरेंस में चलेगा सर. लाइफ इंश्योरेंस में सेल्फ, स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट्स नहीं चलेगा. मेडिकल इंश्योरेंस में पेरेंट्स भी चलेगा. पॉलिसी कब लिया? 1/4/2018. मतलब क्या? आफ्टर 2012 10% ऑफ सम अश्योर्ड. सम अश्योर्ड कितना है? 1,80,000. पे कितना किया? 20,000. पर डिडक्शन आएगा सिर्फ 18,000. मेडिकल इंश्योरेंस फॉर सेल्फ 12,000, स्पाउस 14,000, दोनों मिलकर 26 पर आएगा 25. समझा क्या? डोनेशन टू पब्लिक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन 50,000 बाय वे ऑफ चेक. किधर जाएगा ये? जी में किधर? लास्ट वाला के इसमें जाएगा. वेरी गुड. LIC पेंशन फंड हम ले लेंगे 80CCC के अंदर. नेशनल चिल्ड्रंस फंड ले लो सीधा 100%, नो क्वालिफाइंग लिमिट. जवाहरलाल नेहरू ले लो सीधा 50%, नो क्वालिफाइंग लिमिट. नेक्स्ट फॉर प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग 100% विथ क्वालिफाइंग लिमिट. PPF किधर लेंगे बेटा? ATC. देखो ATC ले लिए 1,18,000 पूरा मिलके फिर से 1.5 लाख. ATC का ले लिए 25,000. अब मैं ATG का वर्किंग कैसा करूंगा? नेशनल चिल्ड्रन फंड्स तो 100% ले लिया, जवाहरलाल नेहरू तो 50% ले लिया, फैमिली प्लानिंग ट्रस्ट दोनों को एक साथ लेके आऊंगा. अब मेरा क्वालिफाइंग लिमिट क्या है? GTI माइनस डिडक्शन. GTI कितना है मेरा? 775 में से 175 माइनस कर दिए तो बचा कितना? 6 लाख. इसका 10% कितना है? 60,000. 60,000 कैसे यूज करूंगा मैं? पहले 40 को यूज करूंगा तो आ गया 40,000 यार. बाकी 50 में से कितना लिमिट है? सिर्फ 20,000. उसका कितना परसेंट है? आ गया 10,000. उस चक्कर में मेरा आया 87,500. आर यू अंडरस्टैंडिंग? प्रेजेंटेशन अलग किया, वो अपन अलग करे, कंटेंट तो एक ही है. I hope we got good clarity on this. There is a possibility that sometimes in exam they may play on this concept. They may. I'm not guaranteeing they will, but they may play. Take it. 80G. Sir, I'm sure we got a good clarity on this point, my dear friends. That's it, sir. That is the story of ATG, and that is the story of our deductions given by chapter 6A. I'm sure we got a good clarity of thought on these deductions, my dear friends. So with this story, sir, we are done with deductions. We are done with return of income. So in our revision batch, we are just left with few points and TDS to talk, and it will be time to spend on AMT 115 BSc and all. Very, very small points to talk. That will complete tomorrow and close it off. Clear? Thank you so much, guys. Take care. See you all tomorrow.
Bye bye, online friends. Take care.